Your host Isha Bhala, and I'm delighted to have all of you join us today. CLFMA of India, as you well are aware, Compound Livestock Feed Manufacturers Association of the country today, which serves as a central body for the Indian livestock and feed manufacturing industry, fostering engagement among stakeholders. It is our honor and pleasure to welcome you all. So may I now request our chairman, Mr. Divya Kumar Gulati ji, to please escort our chief guest, Professor S.P. Singh Baghel, Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy and Panchayati Raj, Government of India, to please join us on the dais as we look forward to the auspicious lamp lighting ceremony. May I request our wonderful audience to please put together as Sir joins us on stage. May I also request our guest of honor, Shri Vakiti Srihariji, Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana, to be escorted by Mr. Vijay Bhandare, CLFMA MC member and convener. May I request all of you to please put your hands together as I now request Mr. Vijay Bhandare, CLFMA MC member and the convener, to escort our guest of honor. May I also request our special guest, Shri Sabyasachi Ghosh, IAS, Special Chief Secretary, Government of Telangana, as I request Mr. Anushraf Gulati, MC member, to please escort him on the humble dais amongst our wonderful guests here. A round of applause as they step on stage, please. I would like to extend a warm welcome to our special guest, Dr. Muthukumar Swamy B., Joint Secretary, NLM, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, to be escorted by Mr. Abhish Shah, Deputy Chairman. Thank you so much, Mr. Shah, for joining us. May I now request Shri Tarun Sridhar, IAS retired, to please join us here on stage and to be escorted by Mr. Nisar F. Muhammad, Honorable Secretary, our Honorary Secretary. Welcoming Sir here on the wonderful dais. Thank you so very much for joining in. As we look forward to the very kind presence of our dignitaries here on the dais, once again, a very warm welcome to our guest of honor, Shri Vakiti Srihari, Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana. He's being escorted by Mr. Vijay Bhandare, CLFMA MC member and convener. We have the Member of Parliament, Idira Rajendraji, amongst us. I would like to extend a very warm welcome and request his very kind presence here on stage. Mr. Nisar F. Muhammad has specially gone to escort him here on stage. We welcome you, sir. It is wonderful to have you amongst us. And as you all join in, what better time than this to extend a very warm welcome to you all. May I please request our guests to take a seat as we are now going to begin with the auspicious lamp lighting ceremony. As per the Indian traditions, may I please request I would like to request all our guests to please take a seat. Thank you so much. I would like to humbly request our dignitaries on the dais, our chief guest, our guest of honor, to please join us for the auspicious lamp lighting ceremony as per the traditions of our country that we are so very proud of. I would like to request all of you to join us with the chants of Lord Ganesha's Vandana.
Pagelji, Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Panchayati Raj, Government of India. Our guest of honor, Sri Vakati Srihari. Our special guest, Sri Sabyasachi Ghosh. Our special guest, Dr. Muthu Kumar Swamiji, Sri Tarun Sridharji, Sri Rajendraji, Member of Parliament, all joined by the wonderful presence of our chairperson, Mr. Divya Kumar, our wonderful team members right here joining us for the wonderful group photograph, Mr. Vijay Bhandare ji, Mr. Nisar F. Muhammad ji. It's a pleasure to have our dignitaries join in for the auspicious lamp lighting ceremony. I would like to request our dignitaries to please take a seat. And thank you to our wonderful guests for their kind presence. I would like to request you to please take a seat in the audience. Good evening, and once again, let me present a hearty welcome to all our guests. I would like to request our friends from the media to please join us at the dais that has been created at the back end so that we can get a frame for all our wonderful members. CLFMA, as you well know, serves as a central body for the Indian livestock and feed manufacturers industry, fostering engagement among stakeholders. Today, we play a vital role in the Indian economy by promoting growth and sustainability of the livestock sector. And with over 250 members, we are growing as we speak. So let's hear a round of applause for all our members and all the stakeholders making sure that we are a growing number. Thank you. It is time for us to honor our wonderful dignitaries here on the dais. I would now like to request Mr. Divya Kumar Gulati ji, Chairman of CLFMA of India, to please felicitate our chief guest. May I request our team to join us on stage with the bouquet, the wonderful Indian podi, and the memento. My wonderful team members, Colonel Vinay ji, may I please request the wonderful team to join us on stage? Ma'am, may I request you to please step forward? I request all of you to please put your hands together as we present a hearty welcome to our chief guest, Professor S.P. Singh Baghel, Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Panchayati Raj, Government of India, as we welcome him and thank him for his presence, presenting him with the traditional body right here on stage and a memento as we thank him for honoring us and being a part of our 66th National Symposium 2025. Mr. Divya Kumar Gulati presenting him with the memento right here amongst our august gathering. We thank you, sir, for your kind presence. May I request the team to please wrap it up nicely so that we can present it to sir. Thank you so much, Mr. Divya Kumar Gulati. You've been wonderful. May I now request Mr. Vijay Bhandare to please felicitate our guest of honor, Sri Vakati Srihari, Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana. May I request all of you to please put your hands together as we present.
May I please request all of you to put your hands together, as I would now like to request and extend a very warm welcome to Shri Etara Rajendra ji and present him with a beautiful bouquet as we welcome him today. May I please request Shri Bhave ji on stage to present him with the bouquet and the honorary podi. A very warm welcome to Shri Bhave ji as he joins us on stage, please. My humble request to all our audience members to please put their hands together as we thank Shri Rajendra ji, Honorable Member of Parliament, for joining us. Thank you so very much, sir. It's a wonderful opportunity for us to welcome you. Thank you, Bhavasa, for joining in. May I please request Mr. Sumit Surekha, Deputy Chairperson, to please join us on stage and welcome our special guest, Dr. Muthu Kumar Swamy, BG, Joint Secretary NLM, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Presenting you with the wonderful memento. Thank you so much for being here. Thank you, Surekha ji. May I please welcome Mr. Suresh Deora ji, immediate past chairperson, to please join us and honor and felicitate Shri Tarun Sridhar ji. A very warm welcome to him, and may we take this opportunity and thank him. Thank you so very much, sir, for your very kind presence. We much appreciate you joining in. May I have a few more bouquets and podis, few more bouquets. May I please request Mr. Nisar Mohammed to extend a very warm welcome to Shri Metu Sai Kumar. Let's hear a round of applause. I'd also like to request Nisar ji and Mr. Murli Krishna to welcome Mr. Bora Ganeshwaram Mudiraj. Mr. Bora Naneshwar Mudiraj ji, we welcome you and we thank you for your very kind presence amongst us. Thank you so very much for joining us and honoring us. May I request all of you to be a part of this beautiful photo opportunity so we can capture this wonderful frame with you all. May I request you all to please join us for this group picture so we can create a memory out of your very kind presence. And my wonderful audience, if I may request all of you to please put your hands together. Thank you all so very much for joining it. And we are indeed honored by your kind presence. I would once again like to request my video team, friends from the press, have been kind enough and very patient. So I would like to request all audience members to please remain seated as they capture this beautiful moment here on stage. And as we truly thank our dignitaries for joining in, for supporting us and being a part of the 66th National Symposium right here.
As you're well aware, CLFMA of India today is a voice of the country's dynamic livestock sector, a sector that has witnessed impressive growth over the years since we have been there in establishment, and making sure that we grow and play a very vital role in the way that the country is seeing us. And as we talk about our challenges, as we talk about our opportunities, as we talk about the way we're growing, what better occasion than this to have all the key stakeholders amongst us? So, may I request the industry to put their hands together for themselves and the kind of work that they're doing in making sure that they take the Indian economy a step ahead. To set the tone for today and to present a very warm welcome to each of you, may I please welcome our convener, Mr. Vijay D. Bhandaraji, MC member of CLFMA of India, to please join us here on stage. A round of applause as he steps forward and extends a warm personal welcome to each of you. Namaskar, good evening. We apologize for small delay, but thank you very much for your kind patience. Honorable Minister, Government of India, SP Singh Baghel ji, Honorable Minister V. Srihari ji, Government of Telangana, the most lovely person of our poultry industry from Telangana is Itila Rajendra ji, the Member of Parliament from Malkajgiri. Then Sabha Sakshi Ghosh ji, he is Additional Chief Secretary, Animal Husbandry. Muthu Swami ji, JS, Government of India. Tarun Sridhar ji, respected dignitaries, my industry colleagues, all association presidents, chairmans, the press media. At this time, CLFMA, we have decided to give award to the brilliant students of veterinary science. So I do welcome them also. It is a great pleasure and honor to welcome you all, esteemed guests. And on behalf of industry and on behalf of all of you, I request all our Government of India and Government of Telangana ministers. Today we are crucially at a crucial junction of our business and agriculture economy and a vision of our Honorable Prime Minister. I think from last 3-4 years, in fact, when we made Golden Jubilee in Bombay also, they were talking of doubling farmer income. The path is not easy, several challenges, but with collective efforts, we will definitely win. As we know, animal agriculture, basically we can divide in 4 parts: the dairy, poultry, aqua, and the small ruminants. In that, so many. If you see in dairy, we are number 1 in the world. Eggs, we are number 2. And shrimp, we are number 3. Now, we are having today and tomorrow session, like dairy, growing towards a global competitive dairy. We will have the experts tomorrow, and it will be an open discussion. Poultry, managing emerging challenges and harshening opportunities. And aqua, because aqua means normally the shrimp part, normally it is being exported. But as you know, some global challenges are there. So looking beyond export and expanding local market at present where we are. If you, as I spoke to you, the dairy, the white revolution, I would like to remember Verghese Kurian. He has made that white revolution. And poultry, that Kurian was almost a godfather for dairy. And for poultry, I would like to remember
late Dr. B.V. Rao sir, and because the efforts they made, we are enjoying those fruits today. Now tomorrow we have panel discussion. Panel discussion, feed, raw material and other inputs, balancing the balance sheet. Now panel discussion we have with all association. This time a new thing with our chairman. Two things he did, two things. Like all association we have invited and for students so that more these veterinary students get attracted to our industry. And we have one more panel discussion tomorrow, animal agriculture, health challenges and potential solution. Honorable Minister of our Telangana, sir, I would like to bring to your notice, Andhra Pradesh is giving 5 eggs per week. They are giving 3 eggs per week. If you see today, egg is at 6 rupees price, the amount of nutrition you get, I don't think any other product can challenge the egg. So I request Government of Telangana Minister, if you could add another 2 eggs, if it is possible, you can try. That is what my request is. As our Honorable Minister, 2047, we will be a developed country. That is his dream, and definitely we are going to support him and we are going to get benefit out of it. If you see today, around in our GDP, 8 to 10%, animal agriculture is contributing. Our sector is day by day, it is organized one. Poultry and aqua more organized, dairy also slowly getting organized. Because if you see, our agriculture produce, whatever wastage they have, the poultry is consuming 100%. Like rice, you can say paddy, the husk is used in broiler farms. Now whatever agriculture waste stems are there, as you know, all are being made pellets. The 90 mm pellet is being used in our boilers. So I feel for agriculture, all governments try to support agriculture. So they are all produce, even oil, after solvent extraction, when the oil residues are there, that's also there are so many companies making some formula. We are using that in our poultry feed as an energy source. Otherwise, earlier, I don't know what they call, but earlier it was going to soap industry. And there was hardly price, 10 रुपए किलो होता होगा. आज वो 65 रुपीस केजी जाता है, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का वेस्ट है वो. क्योंकि इनडायरेक्टली जो भी हम इंडस्ट्रियल यूज में आएगा, मेरे हिसाब से हंस का भी पहले फ्री में जलाना पड़ता था. नॉर्थ सर को पता होगा, नॉर्थ इंडिया पराली बोलते थे, वो जलाएंगे फिर उसका पोल्यूशन, तो वो प्रॉब्लम भी ये पूरा हमारे पास ही कंज्यूम हो रहा है अभी. और दूसरा, अगर हम ये लकड़ी से पिलेट नहीं बनता था तो हमको लकड़ी जलाना पड़ता था, फिर वो फॉरेस्ट वालों का टेंशन अलग. सो वो भी उसके भी बहुत प्लांट लग गए. सो बेसिकली हमारा एनिमल एग्रीकल्चर इज सपोर्टिंग द रियल एग्रीकल्चर फार्मर्स. यार थोड़ा पानी दो कोई तो. If you see, like we hear on TV, we hear on papers, agriculture farmers, we said, I'm from Maharashtra, so in Vidarbha region, we hear. But wherever the farmer is having whether cow, buffalo or small poultry, it is an ATM for them. Because every week they get some amount. And even people have piggeries, something they are doing, it is, there is no suicide rate, you can cross check. But people who are only dependent on agriculture, like
If like Vidarbha, Marathwada, in our area also only one crop, Kharif crop. And there is no water source now. Government is doing wonderful job to provide waters. But if they are having some animals of any type, they are happy. Now, as you know, globally, people, when the countries are poor, they eat only calories. The protein part is very less. Now, why this industry has grown? As the people income grows, people income sources has grown, our consumption has grown. So whether egg, fish, shrimp or chicken, the industry is supplying the best protein part. As government is supporting for egg in school because they want to stop the malnutrition in girls, iron deficiency, vitamin B12 deficiency. This is all taken care by our meat product. So with this, I conclude, and our chairman will speak little more on this because his agenda is little. So thank you very much, and once again thank you very much for your kind patience. Thank you so very much, sir, for those very kind words, for setting the tone as to what we can look forward to, and for that very, very warm welcome. Let's hear a round of applause for him once again. Well, as you heard, we have a lot to look forward to. And who better than our chairperson to tell us a lot more of what it is that we can truly look forward to in putting together. He's someone who has contributed immensely towards the association with his vision and continues to do that with several of the innovations and initiatives that he has taken under the tenure of his chairmanship. May I request all of you to please welcome Mr. Divya Kumar Gulati, Chairman CLFMA of India, to please join us and present his warm address. थैंक यू ईशा भल्ला जी। भंडारे साहब, आपका पैशन तो काबिले तारीफ है। आप ऐसे पैशन से बात करते हो कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। I'd like to again welcome Chief Guest Professor S.P. Singh Baghel Sahab, Minister of State, Fishery, Animal Husbandry, Dairy and Ministry of State in the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Shri Vakati Shri Hari, Minister of Animal Husbandry and Fisheries, Sports and Youth Services, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana. Our dear MP Sahab, Hitala Rajendra ji. Shri Sabyasachi Ghosh, IAS Special Secretary, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department, Government of Telangana. Dr. Muthu Kumarasamy, Joint Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairy, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Shri Tarun Sridharji, other people, guests, dignitaries on the dais, and my friends, colleagues, welcome everybody. And I would like to specially thank all the members, all the people sitting on the dais for accepting our invitation and gracing this occasion. Sir, ये पहली बार ये हिस्ट्री में मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी यहां पर बैठे हैं। इसको कहते हैं यूनिटी सर। नाउ इज द टाइम दैट वी वांट टू शो दैट वी आर ऑल यूनाइटेड। थैंक यू सर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है सर। We are waiting to hear your speech also, I'm sure. So sir, I'll just like to name, यहाँ पर मिस्टर सुरेश चितूरी हैं जो लोकल हैदराबाद के हैं, ऑल इंडिया पोल्ट्री बीडर एसोसिएशन के हैं, प्लस इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ CII एनिमल एग्रीकल्चर पार्ट. मिस्टर R. Lakshmanan, ब्रॉयलर कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑल द वे फ्रॉम कोयम्बटूर. रवि कुमार येलंकी, ऑल इंडिया श्रिम्प हैचरी एसोसिएशन. सतीश कुमार जी, ब्रॉयलर ब्रीडर एसोसिएशन नॉर्थ. मिस्टर उदय सिंह बयास,
Indian Poultry Equipment Manufacturers Association, and also having the brand Poultry India. Dr. Sirish Nigam, Indian Federation of Animal Health Companies. Dr. R.S. Sodi, वो शाम को आने वाले हैं सर, some people are delayed. Indian Dairy Association. Dr. Gopal Reddy, Institution of Veterinarians of Poultry Industry. नवीन पशुपति हमारे डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं और प्रेसिडेंट है कर्नाटका पोल्ट्री फार्मर्स एंड ब्रीडर्स एसोसिएशन के. आवर डियर डायनामिक रणपाल डांडा जी, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया. श्री दलजीत सिंह, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन. मिस्टर साजी चाको, ये भी लेट आ रहे हैं बट आ रहे हैं, प्रेजेंट होंगे सर कल के इवेंट के लिए. सोसाइटी ऑफ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स. मिस्टर मोहन रेड्डी, तेलंगाना पोल्ट्री फेडरेशन. Dr. Tirupati Reddy, Telangana Poultry Breeders Association. Dr. Santosh Ire, Vets and Poultry. Dr. Jitendra Verma, World Veterinary Poultry Association, India Chapter. And हमारे प्रिय मिस्टर मदन मोहन मेहती, वेस्ट बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन. मैंने इसलिए प्रिय बोला सर कि मेरी बहू वहां पर भी आई हुई है, तो इसलिए मैंने कहा प्रिय. तो मेरा बंगाल से स्पेशल लगाव हो गया इस चक्कर. Our special invitees, our dear friend, our guiding light, Dr. O.P. Chaudhary, Dr. P.S. Mahesh, Dr. Gagan Garg, Dr. H.R. Khanna, Dr. P.K. Shukla, Dr. Raghavendra Bhatt, and अभी सर नए मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट गोदरेज के मिस्टर कटारिया. We must not forget सर, हमारे पास्ट चेयरमैन भी यहां पर बैठे हुए हैं, वेरी सीनियर, मिस्टर पीएस लुंकर जी, मिस्टर पीएस नंद कुमार जी, मिस्टर भरत टंडन शायद कल आएंगे, डॉक्टर दिनेश भोसले वो भी कल आएंगे, मिस्टर एसवी भावे, मिस्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव एंड मिस्टर सुरेश देवरा. सो सर अगस्त ग्रैदिंग है, बहुत लोग हैं और इट्स रियली लवली टू हैव ऑल द सपोर्ट from the industry who are all here. Sir, थोड़ी सी CLFMA की एक्टिविटीज के मैं ज्यादा समझ ले लूंगा because we have the paucity of time. भंडारे साहब ने कुछ ज्यादा ही समझ ले लिया था, मेरे लिए कम छोड़ दिया भाई आपने, but okay. Sir, गवर्नमेंट में कनेक्शंस, लाइजनिंग, इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट, ये तो हम करते ही आ रहे बड़े सालों से और करते रहेंगे. इस बार हमने क्या किया है सर कि बहुत सारे सेमिनार किए, क्योंकि हमने लगा कि भाई व्हाई नॉट वी शुड कनेक्ट एट द फील्ड लेवल, ग्राउंड लेवल, फार्मर लेवल. तो हमने टाई अप किया फॉर एग्जांपल डेयरी के लिए गोकुल के साथ. अब जब गोकुल के साथ हम टाई अप करके सेमिनार कर रहे हैं तो हमारी टेक्निकल टीम है, उन्होंने सब्जेक्ट दे चूज कि इसके स्पेशलिस्ट कौन होंगे एंड हाउ डू वी ट्राई टू रिजॉल्व. तो ये हमारी एक कोशिश है कि भाई हाउ वी कैन एक्चुअली इंपार्ट नॉलेज डाउन टू दी. फिर हम नामाक्कल गए जो एग का हब है, कोयम्बटूर गए ब्रॉयलर का हब है, पुणे गए. सो वी हैव डन सेमिनार्स ऑलरेडी इन 6-7 प्लेसेस इन द कंट्री इस साल. नई चीज हमने सर एक और की है इस बारी, इंडस्ट्री एकेडेमिया का टाई अप. पहली बार ऐसा हुआ है सर कि वी हैव डन एन एसे प्रोग्राम फॉर द वेटनरी स्टूडेंट्स. इसके बारे में विस्तार में डॉक्टर एएस रानडे बताएंगे कि भाई हमने हाउ वी डिजाइन दिस प्रोग्राम एंड हाउ वी क्रिएटेड. सर आपको जानकर खुशी होगी, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन हमने पोल्ट्री सेक्टर, डेयरी सेक्टर, एक्वा सेक्टर, स्वाइन सेक्टर, इसमें हमारी टीम ने 3-3 टॉपिक्स दिए और स्टूडेंट्स को यह मौका दिया कि यू चूज फ्रॉम एनी ऑफ दीज 3 टॉपिक्स एंड यू कैन राइट एन एसे एंड इट हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय द सुपरवाइजर. फर्स्ट टाइम हमने ये कोशिश की सर, 138 एंट्रीज हमारे को मिली फर्स्ट ईयर में. तो आप सोचो सर, जब ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा, बहुत तकलीफ हुई, बट हर यूनिवर्सिटी में जाना, वेटनरी कॉलेजेस में जाना, बट वी हैव अचीव्ड इट. एंड नाउ बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड आई एम श्योर दीज स्टूडेंट्स विल कैरी द लाइट अहेड कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है. स्पेशली जब आप इनको फेलिसिटेट करेंगे, ऑनर करेंगे बच्चों को, इतना जो अच्छा काम किया है, आई एम श्योर दैट you will be energized and more students will start participating. And these students ही सर, जो भी हमारी problems है इंडस्ट्री की, जो भी हमारी problems है सेक्टर्स की, they will find the solutions and they will have the opportunity to grow in this sector. एक तो हमारे को सर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, this will provide employment also, because
आज पेट इंडस्ट्री सबसे प्यारी है, तो सब पेट इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं. हम तो मुर्गी वाले हैं, अंडे वाले और फिश वाले हैं. But we need the talent to come into our sector also. It's a growing sector. These are all sunrise sectors for us. Especially, sir, if we are 1/3 of the animal agriculture ka GDP, we are growing. We are growing at a very fast pace. So, sir, 240 million metric ton dairy, 140 billion eggs, number 2 in the world. Number 3, 1 million metric ton shrimps, around 7 to 8 million metric ton poultry meat. Sir, we are today, I think, number 3 or 4 in the feed production in the world also, 60 million metric ton total. जिसमें से अकेला पोल्ट्री is 40 billion metric ton. कॉर्न जो हमको लगता है 40 million metric ton, क्ले is around 20 to 21 million metric ton, और सोयाबीन मील हमको लगता है around 5 to 6 billion metric ton. 2030 में अनुमान हमने लगाया है कि सर यही इसी पेस से अगर हम ग्रो होते रहे 75 टू 80 मेट्रिक टन हमारा टोटल फीड कंजम्पशन होगा, जिसमें 54 मिलियन मेट्रिक टन पोल्ट्री होगा, 27 मिलियन मेट्रिक टन कॉर्न लगेगा और 8 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन मील लगेगा. अगर 2040 की बात करें तो 48 मिलियन मेट्रिक टन कॉर्न लगेगा फॉर 96 मिलियन मेट्रिक टन पोल्ट्री फीड के लिए. इट्स अ ग्रेट स्टोरी सर, इट्स फैंटास्टिक स्टोरी. Is it sustainable? Do we have the land to provide this much corn, this much soybean meal? It's a good story of growth, but we need to be extremely cautious that how are we going to feed this sector to be able to grow at the same pace of 8 to 10 or 6 to 8% CAGR every year. So ये सोचने की बात है sir, we all have to think together. We have to come solutions to this, that how do we handle this? क्या GM इसका आंसर है या इसका इंपोर्ट आंसर है? ये तो सर मिल के बैठ के बात करके and we have to find a resolution to this. अब recently जो हमारा another sector which used to get so much foreign exchange for the country, the shrimps, अब टैरिफ लग गया, around 27th अगस्त तक 50% टैरिफ लग जाएगा. What do we do? What will the fish farmers do? What will the shrimp farmers do? Where will they go? So sir, इसके लिए हमारे को we will have to make a special effort. जैसे हमने इंडिया यूके का FTA किया, we have to have the FTAs at a very fast level with other countries also. I believe Russia is also a partner where we have been there recently to partner with. So we have to do the FTAs with various countries and find different markets so that we are not dependent on a single buyer. फिर बोलते ना sir, don't put all your eggs in the same basket. So we need to be careful about that also. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा सर, मिडिल ईस्ट मार्केट में जो हम अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं, they are importing 5 billion eggs every year, मिडिल ईस्ट, जिसमें से पोल्ट्री मीट इज अप्रोक्सीमेटली, और पोल्ट्री मीट इंपोर्ट करता है 2.2 बिलियन मेट्रिक टन, जिसकी वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली $4.6 बिलियन, और इसमें अकेला यूएई सऊदी अरेबिया इज अप्रोक्सीमेटली $2.4 बिलियन वर्थ दे इंपोर्ट, और 70 to 75% इंपोर्ट ब्राजील से आता है. सो इफ our farmers are of the raw materials, of the ingredients at the same price of world level, we can achieve anything, sir. So we need to think about that also. So मेरा मानना है सर that फार्मेक्सिल है, केमिक्सिल है, अपीडा है, एम्पीडा है, पोल्ट्री के लिए कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है हमारे पास. We need to create some export development authority for poultry. Shrimps, domestic consumption is practically nothing. उल्टा है, मतलब पोल्ट्री almost 100% domestic consumption है और shrimp 95% exports है. So we need to create that market for shrimps also within the country. So we need a domestic development authority for shrimps also. So we will have to work together, sir, in creating this platform so that we are self-sufficient first. It's good that you can export, but we need to have that kind of self-sufficiency also.
I would suggest, sir, if we can have an export processing zone for poultry, for example. We have the raw materials available. I've given you the numbers and whatever we are estimating, that if we have these imports at the same price or the local supply, and we continue with the ROTTEP and interest equalization schemes, we can export, sir. And we are quite capable as Indians. They are all here, sir. They know how to prepare a proper product. अभी हमने अंडे बेचे भी हैं यूएस में, हमारे अंडे नॉर्मली यूएई जाते भी हैं. We can get better with time, but आपकी पॉलिसीज, आपकी हेल्प, वी आर देयर फॉर यू. सारे एसोसिएशन वाले यहाँ बैठे हैं. टेल अस where we are willing to participate in developing the authorities, whether domestic हो चाहे export हो, and let's try to move forward together. So ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब लोगों से गुजारिश है, help us help the country to grow at the same pace which we are growing in these sectors. Thank you so much, friends. Thank you so very much for those very meaningful words. And like you mentioned and shared with us, the various issues that we as an industry are facing today, what the real requirements of the sector today are, also how we can be Atmanirbhar and by creating an export procession zone, how is it that we're working on various initiatives, be it the student encouragement initiatives to encourage them and be a part of the industry. And most importantly, how you spoke about how today we need to work together, collaborate. And that is also the theme at which our 66th National Symposium is based. To share with us a lot more on the theme, to present the thematic address, may I request all of you to please welcome Mr. Tarun Sridhar, IAS retired, to join in. A round of applause for him, please. Professor S.P. Singh Baghel, Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Sri Hari, Honorable Minister, Government of Telangana, Shri Rajendran, Honorable Member of Parliament, Shri Divya Kumar Gulati, Chairman, CLFMA of India, Shri Sabyasachi Ghosh, Special Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, Shri Muthu Kumaraswamy, Joint Secretary, Ministry of Fisheries, Dairying and Animal Husbandry, Government of India, Mr. Nisar Mohammed, Mr. Bhandare, my former colleagues in the service, Shri O.P. Chaudhary, Dr. Mahesh, Dr. Khanna, Dr. Gagan Garg, Chief Executive of National Fisheries Development Board, Dr. Behra. I'm sorry, ladies and gentlemen, I know so many of you. If I take everyone's names, probably my 10 minutes would be over. All the dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen. It's my privilege to deliver the thematic address during the inaugural ceremony of the 66th National Symposium of CLFMA. Further, I'm a proud participant in the CLFMA annual conclaves for the last 6 years continuously. And to my good fortune, CLFMA office bearers have also generally involved me in structuring the National Symposium. The theme of this year's symposium is Animal Agriculture in India, the Way Forward. I think Mr. Bhandare in his opening address and Mr. Gulati have already touched upon certain key elements of how animal agriculture should move forward in India. So I'll not strictly deliver what is called the thematic address, but share certain stray thoughts with all of you. Since all of you are very prominent people in productivity, we need to address the way forward. Once we address the product, even a marginal increase in productivity would result in manifold increase in the returns and profits to all the players in the value chain. You see, as against the crop sector, the livestock and the aquaculture sector has been registering a consistent growth of 8% plus over the last decade. The CAGR over the last 1 decade has been consistently above 8% compared to the agriculture sector, which has been hovering around 2 to 3%. So this is what the strength of this sector is. And it may not be politically wise to state, but I'm not being a political person can state that. One of the strengths of the livestock and aquaculture sector is low dependence upon subsidies, whereas the agriculture sector is highly dependent upon subsidies. Resultantly,
the livestock sector and the fisheries sector has ceased to be a mere livelihood sector. It has generated and encouraged entrepreneurs and enterprise. So we have to encourage all the players in the value chain in the livestock and aqua sector, let me say animal agriculture sector, to adopt it as a vocation, as a profession of choice, rather than something given to us by generations, and rather than a mere livelihood activity. Now, you would be discussing several issues and challenges which the sector faces now. Especially, you mentioned the issue of GM crops, how lack of GM. I'm not going into the ideological debate whether there should be GM or not. Let there be an informed debate based on science, based on rationality, rather than sentiments and belief. But it definitely impacts the competitiveness of our products when it comes to global markets. The cost of inputs, the quality of inputs, whether it is seed, whether it is feed, the quality of our genetic stock. There are a whole lot of issues many of these issues you will discuss tomorrow. But there are certain issues which I think I referred to in my address last year also, and recently when I participated in the poultry conclave in Calcutta, there also I mentioned these issues. There are certain hidden challenges which nobody is talking about. Recently, just few days back, I read a news item that there is an acute shortage of availability of buffalo meat in Goa because many abattoirs in Maharashtra and other states have been closed. Why they have been closed is because somehow the people who are manning and operating them are feeling that the environment is not conducive in terms of running those abattoirs. We read somewhere there was a news item that on Independence Day, several local bodies said that on the Independence Day, there should be no sale of eggs and meats. So there is this hidden forces which are creating a bias against livestock products. I mentioned it, and I think I'll again not feel shy to mention it. Honorable Union Minister is here; he would excuse me. We have a Eat Right India campaign being run by the FSSAI. The Eat Right India campaign consciously discourages people from consuming egg and meat. Now, these are very subtle kind of forces working, and the real challenge is they are working out of genuine belief. It is not that those people are enemies of the livestock sector or anything. They genuinely, sentimentally, they passionately feel about it, and the propaganda is rather strong. Now, you don't necessarily have to fight these, but you have to educate the people. You were mentioning, Mr. Bhandare was mentioning in terms of the richness of the nutrition and the protein of poultry and other things. Now, these are the things which need to go in the public domain. And that is where organizations and associations like CLFMA of India have to play a very big role. Again, Mr. Gulati, sorry, I am not here to contradict you or challenge what you said. Now, again, you were mentioning exports. Now, you see the global trade regime is getting disrupted, and it is getting disrupted very fast. You have to recognize it. At the same time, let us recognize that the whole world accepts that India is the biggest consumer market in the world right now. So let us wean ourselves away from our obsession with exports and try to create healthy domestic markets. Unfortunately, we have been so obsessed with export markets, and that obsession has a historical reason behind it. Because we were always short of foreign exchange, the balance of trade was always against our favor. So we encouraged and pushed for exports. That's why we created authorities like MPDA and EPIDA. Now I think we need not create more authorities. Number one, the term authority itself is antithetical to facilitating trade. You don't need an authority. You need a body which encourages you, which promotes and which facilitates. I think today we do not need MPDA or EPIDA. We need MPDA and EPIDA to reinvent themselves into actually becoming a trade and marketing facilitation bodies rather than authorities trying to regulate exports outside. You see, now shrimp industry, we were the biggest shrimp exporter to the United States. The shrimp industry does not have a strategy or an alternative plan or a plan B to handle the situation now. Very soon, the fear is that the US market is going to be captured by the shrimp from Ecuador.
Ecuador, in any case, has gone ahead with us. So try to give this product which we are creating to the domestic market, to the domestic consumer. After all, our entire dairy is consumed locally. Our entire dairy is consumed locally. Our entire egg production is being consumed locally. Poultry is hardly traded globally. Your only threat is now to shrimp in terms of exports. So let us not be too obsessed with exports. Let us accept and recognize that we are the biggest market in the world. Lastly, I will not take much time. We are running behind schedule. Apart from this distinct bias towards vegetarianism, there is a lot of misgiving and misinformation about the sector which is floating around based on highly unscientific information, highly unscientific analysis, and with absolute lack of credible data and information. One is our poultry and aqua is getting a very bad name by repeatedly threatening, by repeatedly blaming the sector for the global challenge of antimicrobial resistance. Any number of publications, mainstream and otherwise, in this country, scientific journals use very strong language like Indian aqua farms and poultry farms are spawning bugs of AMR. Globally, it is said that India and China probably are the countries to blame for the global crisis of AMR. Data says otherwise. I have been quoting the data. FAO is the only credible source we can rely upon. They say that the global use of antimicrobials in the veterinary sector or in the livestock sector is somewhere between 63,000 tons to 140,000 tons. What kind of range is this? This is the most ridiculous range, and no statistician would ever accept this range. Our own industry, INFA, had done studies. They have done studies over 2 years, and they have come up with the figure that the industry figures that 900 odd tons is what is being consumed by the animal health industry or the animal agriculture in terms of antimicrobials. Or not all the antimicrobials would be unwanted. After, antimicrobials are essential in terms of protecting the health of living beings. The global use of antibiotics by the livestock sector in India would be close to 1% or less than 1%. Scientifically established figure says that 80% of the use of antibiotics in the veterinary sector is in the cattle, and primarily in the cattle which are reared for beef. We don't have beef industry in this country. The combined use of antibiotics in aqua and poultry is close to 10% only 10% globally. So how can we just accept the blame upon ourselves, and our scientists also start accepting this data? Second is greenhouse gas emissions. Another figure that greenhouse gas emissions, because of the huge livestock population we have, so probably we are responsible for these greenhouse gas emissions. So India has to take the burden of now reducing this by putting curb on our livestock sector. Figures again are otherwise. 14.5% of total global gas house emissions are attributed to livestock sector. And even this 14.5% figures includes the emissions from transportation of livestock products to the consumer end. So it is a artificially highlighted figure. I'm not here to challenge these figures or otherwise. All I'm saying is industry collectively, now that all of you are on one forum, on one page, used to collectively educate the public, educate the consumer, let them make their own choice. If a consumer does not want to consume a livestock product, it's his choice. We must respect it. But we must ensure that the choice should be an informed choice based upon reliable, credible data and information. These are the few points I wanted to highlight. I would just close my initial address. I'll again be participating with you tomorrow by stating that one again overarching issue which we need to address is the productivity of the sector, and productivity will be increased if as policy makers we have two very senior officers. Also we have the Honorable Minister also. When we frame policy, when we discuss various schemes and strategies for this sector, we start with saying, you also said it, I also said it, Mr. Bhandare also said it, we produced 240 million tons of milk. Let us say we produce milk worth this much value.
one cattle or one buffalo of the farmer gives him this much money. Therefore, it makes good economic sense to adopt dairy farming. Mere absolute numbers would probably not be the right strategy. So in future, when we talk in terms of policy and strategy, rather than talking quantity, we should talk in terms of the value of our livestock produce and value to all the players across the value chain. Thank you, ladies and gentlemen. All the best for this. Thank you so very much, sir, for your words and for highlighting several issues there. We appreciate your presence and look forward to your segments tomorrow as well at day 2. It is now time for us to take a moment and really present to you a moment that we're so very proud of. CLFMA Achievement Awards are today given to individuals who have contributed tremendously towards the industry. They have made sure that today they have taken forward the development of the Indian livestock industry, and at the same time we wanted to take a moment and appreciate their work and their passion. To share with us who is taking home the CLFMA Lifetime Achievement Award, may I request all of you to please welcome Mr. S.V. Bhave, past chairman CLFMA of India, to join us here on stage to share with us who the honorable and the absolutely wonderful leader is that's taking home this huge honor. A round of applause for him. Good evening. This is one of the important part of AGM and symposium that CLFMA always gives a Lifetime Achievement Award. And this year, the award is declared to 70 years young enterprising person, Mr. Praveen Lunkad. May I request all of you to please put your hands together as we extend a very warm welcome to Shri Praveen Lunkadji, past chairperson of CLFMA of India, and request Mr. Sameer Chotai, President, E-Zone, to escort him as I request sir to share a few words and read out his very kind citation. Yes. So Mr. Praveen Surajmal Lunkad, born 13 December 1955, is a seasoned entrepreneur with over 47 years of experience in agro-processing and international business sector. The commerce graduate with diploma in business management from BMCC College, Pune. He has established successfully operated several agro-processing and biochemical units under the Nava Maharashtra Group of Industries, with the factories in Sangli, Solapur, Shirwal, and an international trading office in Mumbai. Beyond his business achievements, Mr. Lunkad has played a vital role in various trade and industries associations. He had served as a past president of CLFMA and Solvent Extraction Association of India. He is president emeritus for Krishna Valley Chambers of Commerce and Industries, Sangli. Deeply committed to community development, and he has also founded and supported multiple organizations and trusts such as Suraj Foundation, Krishna Valley Advanced Agricultural Foundation, Suraj Sports Academy, contributing significantly to education, agriculture, cultural initiatives, and rural development in Maharashtra. An accomplished sports enthusiast, Mr. Lunkad was a school-level national basketball player in 1972 and continues actively to promote sports. He has received several accolades, including recognition as highest exporters of kokum fat in India for 5 consecutive years, and late Sachin Vyas Krida Prize for his contribution to sports. Widely traveled, and he has represented India at more than 100 international seminars and conferences across 50 plus countries. Married to Mrs. Aruna Lunkad, he is blessed with 3 daughters, all settled in their families. So lastly, I would say
age is only a number are the right word for Lunkar Saab. Thank you. Please put your hands together as we now present with the CLFMA Lifetime Achievement Award to Mr. Praveen Lunkad. May I request all of you to please put your hands together as I now request Honorable Minister Sir Professor S.P. Singh Baghel, Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Panchayati Raj, Government of India, to present him with this honor and the acknowledgement of the career that he has dedicated towards the growth and the sustainability of the livestock industry. A round of applause and a standing ovation as we present him with the honor of the CLFMA Lifetime Achievement Award. Many, many warm wishes to you, sir, as you steer the ship forward with your directions. Thank you, audience members. Please do take a seat as we present him with this wonderful honor. We'll get to hear a few words of inspiration from him. Many warm wishes to you, sir, for taking home the CLFMA Lifetime Achievement Award and being honored by none other than Minister Sir himself. I would now like to request Mr. Praveen Lunkad to please share a few words on being presented with the CLFMA Lifetime Achievement Award. With paucity of the time, I will not take much of your time, but I am heartily thankful to all CLFMA, the members, the audience. I am watching this industry since 1978, is now almost 47 years. And I think there are many more challenges to come. And our CLFMA and the entire industry is fully equipped for that. I would like to say that the first vegetarian meal for the poultry feed I was able to launch in the country. And now the entire, almost the feed industry is vegetarian of the poultry industry. That is one of the achievements. I always liked it. And the, sir, there are many things to now challenging coming into the poultry and the entire feedstock sector, for which I am still ready to come and take upon entire challenges and the future developments. I would like to say in a brief that picture abhi baki hai, tiger abhi zinda hai. Thank you so much, Tiger, for joining us here. Those wonderful words, and they made so much more and touched our hearts. Thank you for that wit, that humor, and that passion that you continue. A round of applause for him once again. Thank you so much. It is time for us to honor a few more of our leaders for the vision that they showcase and the way that they have been dedicated in advancing the animal husbandry and the livestock sector in the country. To share more about who our next awardee is, may I have the pleasure of inviting Mr. Naveen Pasupati, Deputy Chairman, to please join us on stage and share with us yet another wonderful leader who is taking home an honor this evening amongst our wonderful industry colleagues right here. Evening to everybody out here. It's a pleasure for me to read out the journey of Dr. Karthikeyan. So Dr. Karthikeyan is a BVSc, MVSc, is a distinguished veterinary consultant and a poultry industry specialist with over 58 years of professional experience. Graduate and postgraduate from Madras Veterinary College, 1967 and 1970. He's played a pivotal role in the growth of modernization of poultry sector across Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. His career spans key roles in government service, poultry corporations, leading feed companies, and premier breeder and hatcheries, where he's established a strong foundation of technical expertise and industry leadership. In 1996, Dr. Karthikeyan has been served as an independent consultant since 1996, guiding
number of leading poultry enterprises, hatcheries across southern part of India. His work with renowned farms such as Suguna, Shanti, MBS, Valarmati, and several others have empowered entrepreneurs and integrators to build a successful poultry ventures. Recipient of the prestigious PRISM Award from Venkateshwara Hatcheries, he continues to be a trusted advisor, mentor, guide, leaving a lasting impact on the Indian poultry sector. Through his expertise and genetics, feed management, and farm development. Welcome, Dr. Karthikeyan. Thank you so much for those words, Naveen ji. May I request all of you to please put your hands together as we congratulate Dr. K. Karthikeyan. And as I request all of you to please welcome him, I would like to request Mr. C. Sarunanan, President, South Zone, to please escort him here on stage. And may I request our wonderful guests to please put their hands together as he now accepts our congratulation and being presented by this honor by none other than the Honorable Minister, Sir, Professor S.B. Singh Ghagel ji. Thank you so very much for joining us here today, and we wish you the very best as you accept the award and the honor you are presented by CLFMA. A round of applause from my wonderful audience. May I please request him to say a few words? I take this opportunity to thank the organizing committee who have nominated me for this particular special distinction. This will motivate the future veterinarians who are now in the field. They are also put on almost about 20-25 years service. When they finish their services up to 40, probably they will also receive such awards. And this would not have been happened unless without the support of the local people like Mr. Lakshmanan and other big people in Coimbatore. I wish the 66th National Symposium a grand success tomorrow. Thank you, sir. Thank you so very much for those very kind words. May I now request all of you to please welcome Mr. Abhay Parnikar, Deputy Chairman of CLFMA of India, to join us on stage and share with us yet another CLFMA awardee. May I request all of you to please welcome him with a round of applause. Good evening, everyone. Dignitaries on the stage. It gives me immense pleasure to read the citation for a very special person, which is also bringing much needed diversity to this group, Professor Jyoti Palod, who's a CLFMA awardee. Professor Jyoti Palod is an academician, researcher, and a mentor in the field of animal nutrition, livestock, production management, and poultry. She completed her BVSc and AH and MVSc and AH in animal nutrition and feed technology, both with first division from the prestigious College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, MAU, and was awarded ICAR Junior Research Fellowship for her postgraduate studies. She completed her PhD in animal nutrition from Duasu, Mathura. With over 30 years of professional experience, she is serving as professor for more than 15.5 years. She is a fellow of the National Academy of Veterinary Science, fellow of the Indian Poultry Science Association, fellow of Animal Nutrition Association, and fellow of Indian Society of Animal Production and Management. Under her guidance, one MVSc student received the prestigious
Bharat Ratna Pandit Govind Ballabh Pant Gold Medal Award. Professor Palod currently serves as a governing council member of the National Academy of Veterinary Sciences, Executive Council member of the Indian Association of Women Veterinarians, and Joint Treasurer of the Animal Nutrition Association. She has successfully led multiple ICAR and university-funded as well as field-oriented research projects. Her academic output includes 155 research papers published in reputed national and international journals, 6 manuals, 3 books, 20 book chapters, and 13 booklets folders. With more than 200 popular articles published in both Hindi and English, she has played a vital role in connecting cutting-edge research with the needs of livestock farmers. She has guided 3 PhD and 11 postgraduate scholars and contributed as advisory committee member for over 60 PG and PhD students. She serves as an editorial board member of 15 reputed journals and magazines and has been the recipient of 20 distinguished awards from various professional organizations. Please join me in congratulating Professor Jyoti Palod. Please do put your hands together as we now welcome Professor Jyoti Palod. And may I request Mr. Balaram Bhattacharya, MC member CLFMA, to please escort her and welcome her here on stage. What an honor and pleasure to have ma'am be a part of this spectacular occasion here at the 66th National Symposium 2025. May I please request Honorable Minister Sir Professor S.P. Singh Baghel to present her with the absolute wonderful honor and the memento of appreciation that truly calls for the work, the very well-deserved award. A CLFMA honor being presented to her. Many, many congratulations to you, ma'am. Thank you, sir. I would like to request ma'am to share a few words with us on what this win feels like. Good evening to respected dignitaries on the dais, delegates, dear students, ladies and gentlemen. I am delighted to have this prestigious CLFMA award today, and I wholeheartedly thanks CLFMA for my selection in this award. I would like to thank Almighty for His blessings and dedicate this award to my parents, my teachers, and my family members, especially my late father, who has been my valuable and guided person for this journey. I am also thankful to my institute, that is Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, my colleagues, my students, and especially my husband, who as a veterinarian has been source of inspiration for all of my this journey. I would like to work with CLFMA for the upliftment of dairy and poultry farmers and for dairy and poultry industry as well. And I would also like to work with CLFMA in the form of to work it for its publication, as I have been editorial member of different scientific journals and monthly magazines related to poultry and dairy. Thank you. Thank you so very much, ma'am. Once again, a round of applause as we pass on our very warm wishes to her. Well, it is now time that I share with all of you that for the first time ever in the history of CLFMA, a very special initiative has been taken for young students. That was to encourage them through ways like these, which meant that the next generation considers joining the industry and paves way for a sustainable future.
To share with us a lot more about this program and this initiative, may I have the pleasure of inviting Dr. A.S. Ranade, Head CLFMA Technical Committee, to share with us what this program is all about and also welcome the winners on stage. A round of applause for him, please. Welcome. Thank you so much. Very good afternoon, very good evening, everybody. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais. I'm very well aware that there is an acute shortage and paucity of time. I'm trying to speed up the things, but it's a really good initiative the CLFMA has taken this year. Just 2 minutes I would like to spend to explain you what we have done. See, the CLFMA has been organizing orientation program since long. I remember the dignitaries who are sitting in the audience, even Dr. Anaukar, they all have visited my institute and we have listened to them in the form of orientation program. But this is for the first time. The essay competition has been organized under the able leadership of Mr. Divya Gulati. And as he has explained, 4 topics were given: poultry, aqua, dairy, and swine. And students were asked to submit the essays. 140 plus essays we received. Our technical committee, which is comprising of certain important dignitaries like Dr. Masari, Dr. Huda, Dr. P.L. Shinde, Dr. Koskewar, and myself, we all evaluated those essays, and it was a tough time for us to evaluate the essays, no doubt about it. But finally, we could, form the consensus, and we have selected the awardees this time. Because of paucity of time, I would hurriedly take the names of the awardees. I would request the awardees to come quickly on the dais and accept their award in the form of a trophy, in the form of a check of the award amount which has been given, and the certificate which we have already declared. First, I would take the names of the students who have got the first prize in all 4 sectors, right? So the first is Prasad Shivaji Vadadkar, Lanze Sunita Kushal, Rishikesh Tekade, and Tamanna Latif. However, out of that, Rishikesh Tekade and Tamanna Latif are not present over here today because of some pre-assigned engagements, but 2 students who have secured the gold medal, the first prize, Prasad Vadadkar in poultry sector and Lanze in dairy sector, they are being awarded and felicitated at the hands of Honorable Minister. They are the winners of the first prize, gold medal, and a cash prize of 100,000 rupees each, which is the sizable figure, sizable amount for them. And and I once again thank Dr. Huda and Dr. Masari and all my colleagues who have helped me to evaluate these essays, because it was a tough time, tough job. Yeah. Right, now I would like to call upon the silver medalists, or the students who have got the second prize in all the 4 sectors. Dr. Vishal Patil from poultry, Manath Venela from dairy, Kanish Kamale in swine, and Patekar Prakash in aqua. All 4 of them are present luckily today. So kindly, one by one, please come and accept your, So the first is, of course, the Vishal Patil. Manath Venela.
Ish Kamre. And fourth is Prakash Patekar. Yeah. The fourth, Prakash Patekal, silver. Prakash Patekal from Aqua. Four segments, as I said, poultry, dairy, swine, and aqua. This is from aqua sector. He is a scholar from CIFE, Warsaw, Mumbai. Because of paucity of time, I cannot introduce the students to you. I cannot tell the name of their institutes, but they all are representing various institutes of the country, right from IBRI, CARI, DPR Hyderabad, and various other universities. Right, now the bronze medal winners. The bronze medal winners. Dr. Ashish Tiwari in Ashish Tiwari, please come on the dais, and Bhupika Devgan. The two other people couldn't come here today because of some pre-occupied engagements. So Ashish Tiwari is in the swine sector. He is the bronze award winner with 25,000 rupees as cash. And Bhupika Devgan in aqua sector to receive the bronze medal and the cash prize of 25,000 rupees. Yeah. Now, in addition to the gold, silver, and bronze awards, we have also selected 3 students to receive the appreciation certificate awards. And out of those 3 students, 2 are present. I would request those 2 students to quickly come on the dais and accept the appreciation award. Dr. Nikhil Nalbale for poultry sector, Dr. Nikhil Nalbale, and Dr. Rashmi Thakre in dairy sector. Please. One is in poultry and one is in the aqua. Depending on the quality of the essays which we have received, 140 plus, we found it very difficult to select the students, but 2 students have been given consolation prize or the appreciation certificate. And once again, I thank the colleagues, Dr. Masari, Dr. Huda, Dr. P.I. Shinde, P.L. Shinde, and others who helped me in, evaluating the essays. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so very much, Dr. Ranade, for sharing a lot more about this very special initiatives. This is a way for us to make sure that we encourage the next generation and pave the way forward, as you would understand from our theme as well at the 66th National Symposium. And as we look forward to hearing from our dignitaries, I would like to request our special guest, Dr. Muthu Kumar Sami, Joint Secretary, LM, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, to please share a few words with us. Thank you. Honorable Minister of State of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Minister of State in the Ministry of Panchayati Raj, Government of India, Professor S.P. Singh Bagelji. Honorable Minister for Animal Husbandry and Fisheries, Sports and Youth Services, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana, Sri Bakiti Sri Hariji.
Honorable MP Sri Yatala Ranjendra Special Chief Secretary, Government of Telangana, Sri S. Ghosh Ji, Sri Tarun Sridhar, retired IAS officer, Mr. Divya Kumar Gulati, Chairman of CLFMA, Mr. Vijay D. Bandre, Managing Committee Member, CLFMA of India, ladies and gentlemen. Good evening, all. It gives me immense pleasure to participate in this 66th National Symposium, which is going on here. This, I understand, this is a very vital platform to bring together policymakers, industry leaders, researchers, and farmers to deliberate and have a detailed discussion about the different issues what we are facing in the livestock and feed industries. The Government of India is implementing National Livestock Mission, which is supporting the farmers which they can grow sheep, goat, piggery, camel, donkeys, mules, various other schemes are also available like Animal Subsidiary Infrastructure Development Fund, in which 3% interest subsidy is given by the Government of India. Interest subvention is given by the Government of India to promote the infrastructure facilities in the animal husbandry sector. The government is focusing on improving the income of the farmers, providing employment opportunities, and increase the farmers' income twofold. We are focusing on the feed and fodder development under the assistance of quality fodder seed production. A complete seed chain has been established with the incentives for the breeder, foundation, and certified seeds. As we are very well aware of the situation, ground realities, the feed cost is coming around 60 to 70% depending upon the animals which farmers we are rearing. So government is giving a lot of emphasis to improve the availability of the feeds of fodder, in which this program will add 6 lakh hectares annually, yielding 30,000 metric ton of certified fodder seed and nearly 33 million metric ton of additional fodder every year. We are focusing on not only the farmers' land, but also the new activities. We are going to include the fodder production in the non-forest wasteland and the degraded forest land. This is a new initiatives we have taken up to improve the availability of the fodders and its security. Under NLM ADP, the Government of India is giving 50% capital subsidy. It is really very much helpful. Today also morning I have visited a couple of farmers in nearby Hyderabad, and one among the farmers is really has done a very good job, and we are emphasizing improve the breed. So far here we are discussing about poultry and dairy sectors, and the sector which I am talking right now is highly unorganized, which is sheep and goat rearing, and which gives lot of potential to raise the income of the farmers, particularly good quality meat availability in the market, and it will be greatly helpful and address the issue of malnourishment in India. Basically, the problem what we are facing is the breed improvement. That is the focus which we are giving. Thrust has been given on the breed improvement, not only in sheep and goat, but also poultry and cattle, camel, donkeys, and other pigs also.
So certain areas, northeast states, much focus given in the piggery development, and even pigs are all even transported from northern India to northeast. So there is a huge scope, and industrialists can invest in the bigger industries also. That is also, it's not highly organized, and we must focus on improving this industry in an organized way. Poultry sector, as everyone is aware, it has become a backyard poultry into a very well organized integrated farming system has come up in the broiler industry, and the layer production from the 150 eggs per bird to it has reached more than 310 eggs right now. Without the active role played by the private industrialists, which they have exclusively developed a pure line which gives very good yield, which unimaginable 40 years back we could not imagine that we can reach 310 and more than that. And broiler production also, the private players play a very important role without any government support. The cluster approach and the integration of the broiler industry is quite amazing. Started in South India and is entering into the North India also and northeastern states also. Without private participation, it would have not come into existence. One thing I have noticed, there is a gap between research institutes and the industrial industries. And we may give much focus on in this area also, and Government of India is supporting some innovation research also, in which what industries are facing or what the farmers are facing in the field, and what kind of solution can be given based on the research and innovation. The government is supporting to the research institutes also. I urge industrialists, you can bring and you can have an interaction with the research institutes and bring up what are all your research. First example, pesticide issues, antibiotic, antimicrobial resistance issues. See, unless or otherwise we scientifically prove that our products are free from residues, whatever the so-called residues, ultimately that we will fetch a very good product price, whatever we are giving in the market. As our senior colleagues all said, we have a huge potential in India also. Indian market is the vast market. On the foreign countries, they are focusing to pump in the agriculture and animal industry products into India. Whereas we are in a position to, in some of the states, recently Uttar Pradesh has come up very well in the layer production, and the number of eggs is produced in a huge number in Uttar Pradesh also. So gradually from south to, I urge the industrialists to penetrate into north and the northeastern states also. So we are going to implement a farmer producers organization that this year we have got approval, and the next year likely we will implement 500 farmers producers organization, particularly livestock alone. So this is a great opportunity. When we are going to use this opportunity, the farmers will come together and will focus on market also, because earlier market is a big issue for them. They can focus on the market also. They can focus on the effective utilization of the available inputs and various other inputs like seeds, feeds, medicines, veterinary services, and other things. So already I have mentioned animal husbandry infrastructure development fund is available, in which you can invest in feed, milk product and its processing unit. Drugs and vaccine is another area we are not yet focusing, that government is supporting. Please, we can invest in the drugs and vaccines also, wool development, waste to wealth, and finally milk processing unit also. Friends, animal agriculture in India is at a pivotal stage. The various initiatives is being taken by the Government of India as well as the state governments for helping the farmers, entrepreneurs, cooperatives and industry to move towards a more sustainable, resilient and globally competitive livestock sector. The department stands ready to work with CLFMA and the field industry to achieve this shared vision. Thank you and my best wishes for the success of this symposium. Thank you, sir.
Thank you so very much, sir, for your good wishes and for sharing the various initiatives that you've been taking. Up next, I'd like to welcome our special guest and request him to please address our wonderful audience. Please do put your hands together as I welcome Shri Sabyasachi Koshi, IAS and Special Chief Secretary, Government of Telangana. A round of applause as I request him to address the audience. Hello, everybody. I know it has been a long session. बहुत लंबा खींच रहा है और बहुत लोगों को बहुत कुछ कहना है. कहते रहे हैं, मैं वैसा वो प्रतिक्रिया जारी रहने नहीं दूंगा. मैं बहुत कम कहूंगा ताकि आप लोगों को सुन के अच्छा लगे. माननीय श्री प्रोफेसर SP सिंह बाघेल जी, Honorable Union Minister for State for Fisheries and Animal Husbandry, Mananiya Sri Avakiti Srihari ji, the Minister of Animal Husbandry, Fisheries, Sports, Youth Services, Dairy Development, Government of Telangana, Mananiya Sri Itala Rajender ji, Sansad Malkajgiri Medchal from Telangana, Mr. Muthu Kumaraswamy, my colleague, Joint Secretary in the Ministry, a colleague in the IAS, Mr. Tarun Sridhar, Mr. Divya Kumar Gulati, Mr. Vijay D. Bhandare, Mr. Nisar F. Mohammed, Mr. Mettu Sai Kumar, Chairman Fisheries, and Mr. Gyaneshwar, Chairman of the Mudirat Sangam. My greetings and my regards to all of you all. अभी तक बहुत शिकायतें सुनने को मिली है, बहुत सुझाव सुनने को मिली है और बहुत सलाह भी सुनने को मिला है. तो मैं क्या वही बात कहूं या कुछ और कहूं, मैं वही सोच रहा था. मैंने जितना कुछ सुना और जितना कुछ समझा, उसके बाद मुझे एक ही चीज समझ में आया. There is only one thing that I have understood is that is the industry thinking of what's next. You are all complaining about what's happening, what happened, what is wrong in the USA, what is wrong in the world, what's wrong with APEDA, what's wrong with MEPEDA, what is wrong with this, what is wrong with that. But what next? What's coming to hit you is not what you're producing, not what you're doing. What is coming to hit you is a greater disruptive force. And that disruptive force is going to hit you so bad that the free trade agreements which you have been asking is going to rebound on you. जो सुझाव आप मांग रहे हैं वो उल्टा आपको ही आके मारेगा. You have to think ahead कि आज का जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में, आज का जो AI है, आज का जो IT है, how will you use this in feed manufacturing for animals? How will you make the first product or the first input in your food chain? देखिए, आप जानवर को खिलाते हैं, जानवर हम खाते हैं. You know, that's the basic fact of what you all are all about. तो जानवर को आप खिलाएंगे क्या? After all, we are what we eat. ये सारी दुनिया को मालूम है कि आप ज्यादा तेल खाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा. आप गलत चीज खाएंगे, आपकी तबीयत खराब होगी. तो अब जानवर को भी गलत चीज खिलाइए, जानवर की तबीयत खराब हो जाएगी. अब जानवर को गलत चीज खिलाइए, जानवर जैसा ग्रो करना है वैसा ग्रो नहीं करेगा. वो भी तो एक जीव है. इट्स ऑल्सो ए लिविंग बीइंग, जैसे हम लोग सब लिविंग बीइंग है. सो योर बेसिक फोकस इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन शुड बी ऑन हाउ यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी, द प्रोडक्टिविटी, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर प्रोड्यूस. You have to get species specific. You have to get environment specific. You have to get sustainability specific. You will have to get geography specific. जो आप नॉर्थ ईस्ट में खिलाते हैं मुर्गियों को, वो आप शायद हैदराबाद में खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है, यहाँ का जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है. हाउ आर यू गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर फीड? अब मुर्गी का वजन जल्दी कैसे बढ़ाएंगे? अब बकरी का वजन कैसे जल्दी बढ़ाएंगे? अब बकरी का सेहत कैसे और बेहतर करेंगे? यही आपके सामने चैलेंज है. आपको एपेडा, मेपेडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कुछ नहीं करेगा अगर आप खुद इन चीजों का सुझाव ना निकले तो.
You will have to get into AI. You will have to get into mRNA techniques, DNA studies. आपको पहले करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग. आप व्यापारी तभी रहेंगे जब तक आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे, जब तक आपका प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड इन द मार्केट कि ये कम दाम में इससे फायदा ज्यादा हो रहा है. फायदा कम, आपका प्रोडक्ट छोड़ देंगे. आएंगे लोग कहां से? डेनमार्क से आएंगे, नेदरलैंड से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, अमेरिका से आएंगे. आप जो 1 किलो 5 रुपए में दे रहे, वो भी 1 किलो 5 रुपए में देंगे, पर उनका 5 रुपए से किसान का उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा. यही होगा. If you do not concentrate on research and development, government can support you only up to a point. Government can only give you an input up to a point, but you will have to chart your course. Business will not stay the way it is. व्यापार जैसा है वैसा नहीं रहेगा. दुनिया जैसी है वैसा नहीं रहेगी. Everything will change and everything will change fast. My only address and my request to this symposium, where you will all put your minds together, is please see how you address the challenges of tomorrow. The challenge that you are facing and you are bringing out in this conference today is not going to be valid in the next 6 months. You will find an enormous amount of new developments in the world coming and hitting you in the face, and you will not know how to counter it. आप चाहे ना चाहे वो होके ही रहेगा. So please concentrate on these factors. Please get together, put your minds together. Please have 2 good days of nice deliberations. Please see how you can do as a food producers organization to improve the quality of your produce, to tailor it, to maximize the output from it. So I wish you all the best for this very symposium. I hope that India and its industry will rise up to the challenges that are coming in the next in due course of time. I wish you all the very best, and I thank you for the evening. Thank you. Thank you so very much, sir, for your good wishes and sharing those very vital points. Like you said, we need to make sure that we tailor and personalize a lot more so that the final produce is what one can aspire it to be. So thank you for those words. We are honored today by the very kind presence of Shri Atela Rajendraji, Member of Parliament. May I request all of you to please put your hands together as I request him to address the gathering right here. Sir. Honorable Minister, Government of India, SP सिंह बघेला जी, हमारा मित्र, हमारा स्टेट का मिनिस्टर श्रीहरि जी, ज्ञानेश्वर जी चेयरमैन, हमारा मित्र भंडारी जी, श्रीधर जी, दिव्या कुमार जी, मुकुंद कुमार स्वामी जी, सभी जो डैश के ऊपर जो बैठा है, हमारा साथी, सभी लोगों को नमस्कार. कल हमारा मंत्री के नेतृत्व में मीटिंग हुआ था दिल्ली में. आप लोग जो बता रहे, फिशरीज का भी हो, शीप एंड गोट का भी हो, पोल्ट्री का भी हो, सभी ऑफिसरों से रिव्यू ले रहा था. मैं लकीली मैं वो कमिटी में हूँ. अभी जो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है, वो कमिटी में मैं भी हूँ. हमारा मंत्री साहब के नेतृत्व में सारे डिस्कशन होता था. 3rd और 4th डिस्कशन. एक एमपी इसके बारे में जो बात कर रहा था, मैंने कहा आप लोग जो बात कर रहे वो सही समाचार नहीं है, ये गलत है. ऐसा इंप्रेशन वहां तक पहुंचा बोले तो नीचे लोगों को क्या इंप्रेशन रहता है इंडस्ट्री के बारे में,
मैं अपसूप हो गया। मैंने कल मंत्री जी के सामने, आप भी थे ना, आप भी थे, मैं 15 मिनट भाषण दिया। हमारा मंत्री प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव है, काम का मिनिस्टर है। मैंने कहा इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। एक्चुअल 2 मिनट 3 मिनट बात करते रहते, मगर मेरे को 15 मिनट दिया मंत्री साहब ने। सर, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो भी है, इट इज नथिंग बट अ डिपार्टमेंट ऑफ फीड। इट इज नथिंग बट अ डिपार्टमेंट ऑफ फीड। ये सारे जो इंडस्ट्री सक्सेस होने का एक ही कारण है, जो फीड है। नंबर 2, मैंने कहा तो हमने बात कर रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में, जीनोम एरा के बारे में जो बात कर रहा है, मगर जितने जो केंद्र सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट जब तक हम अवेलेबल नहीं करेंगे तब तक आगे जाने का सवाल ही नहीं है। तो पोल्ट्री में तो रेवोल्यूशन आ गया। पोल्ट्री में प्राइवेट पेस रिसर्च करके यहां तक जो लाया था, अगर सभी सेक्टर में अगर लाना बोले तो इंडिविजुअल्स कैन नॉट डू दिस थिंग। ये गवर्नमेंट नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, एग्रीकल्चर के बाद जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो एनिमल हस्बेंड्री में होता है, दूसरा जगह नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट में भी हो, एंड सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी अगर आदमी को काम मिलेगा वो चिकन सेंटर में, आदमी को काम मिलेगा ट्रांसपोर्ट में, आदमी को काम मिलेगा लेबर में। ये सभी जगह काम मिलने का सेकंड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ही है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग मैंने कहा, सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैपिटल इज मोर, मगर गारंटी इज लेस। गारंटी नहीं है। आज हरियाणा से एक एनिमल खरीद के आते 1,24 आवर्स में मर जाते, उसका गारंटी नहीं है एनिमल का। अभी करोड़ों रुपए पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करने के बाद अगर एक डिसीज आता, आज दिखता 5 करोड़ मगर कल दिखता 0 वैल्यू। इतना फ्लक्चुएशन है फेट के हिसाब से। गवर्नमेंट इसके ऊपर दृष्टि लगाना चाहिए, इसको रास्ता निकालना चाहिए बोल के मैं मंत्री जी को कल बताया था। मैंने ये भी मंत्री जी साहब को ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के बाद हमारा सव्यसाची गोशी ने जो कहा, ये डिपार्टमेंट, मैं श्रीहरि जी का एक बात सुना था, ये मिनिस्ट्री मेरे का आया, मगर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। मछुआर जो पालन करता है, गोट एंड शीप, ये सभी बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पिछड़े जाति का होता है। अगर काम करना बोल तो बहुत है इसमें। तो सेटिस्फैक्शन कुछ करा हमने, अगर हिस्ट्री में बोलना है तो ये डिपार्टमेंट में काम करना है। मैंने ऑफिसरों को बोला, अरे आप लोग ये प्रायोरिटी थोड़ी लोग समझते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ा है। मैं समझता हूं जो डिपार्टमेंट प्रजा के लिए सेवा करता है, आपका सेवा के ऊपर ये इंडस्ट्री बढ़ता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है बोल के मैं बोला। आज भी वो एंटीबायोटिक्स देके पालता करते, ये करता है, ये कुछ नहीं रहता। वो सव्यसाची जी, ये पोल्ट्री में आपने जो कहा ह्यूमन फीड के लिए इतना क्वालिटी नहीं देखते, मगर पोल्ट्री फीड में देखते, वो बहुत सेंसिटिव रहता। हम नहीं देखते इतना प्रोटीन होना बोल के, डेली इतना प्रोटीन हमको होना, इतना एनर्जी हमको होना,
ये मिनरल्स होना बोल के नहीं देखते, मगर पोल्ट्री के अंदर हर एक चीज बैलेंस्ड डाइट रखता है, बैलेंस डाइट रखता है. विदाउट लैबोरेटरी, विदाउट लैब, दे वोंट अनलोड द फीड, दे वोंट अनलोड द फीड. मैं मंत्री जी को ये भी कहा, सही है आपने जो कहा वो सही है, जो बेसिक जो राइस आता है, राइस हम खाता है, वहां से जो डीआरपी आता है वो मुर्गी खाता है, वो मुर्गी खाता है वो सस्ता में प्रोटीन देता है. जो भी एग्रीकल्चर में जो सल्फर भी हो, ग्राउंड केक भी हो, ज्वार भी हो, मक्का भी हो, जो ह्यूमन कंजम्पशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट कंजम्पशन करने वाला एक ही है, वो पोल्ट्री एंड रिलेटिव इंडस्ट्री है. इसलिए जो गवर्नमेंट, मैंने कहा 4 लाख करोड़ रुपए जो अनएम्प्लॉयमेंट टैकल करने के लिए केंद्र सरकार जो निर्णय लिया था, वो निर्णय अगर सही रास्ता से अमल होना बोले तो जरूर थोड़ा सोचना चाहिए बोल के मैं बोला. तो बैंक्स कितना मुश्किल होता हम जानता है, हम इंटरव्यू होना चाहिए. हमको एक पोल्ट्री है, हम 10 करोड़ लगाए, इमीडिएट मर जाता कोई वायरस आके, 3 करोड़ 4 करोड़ का नुकसान आता, नेक्स्ट वो करने का पैसा ही नहीं रहता. बैंक के पास गए तो आप ये होना वो होना बोलते. इसीलिए मैंने ये भी कहा, जो लाइव स्टॉक के बारे में जो लोन देता है, ये ये प्राइवेसी नहीं रहना चाहिए. इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देके सरकार इन्वॉल्व होके को सपोर्ट करना भी चाहिए, नहीं तो वो कहाँ चले आता हूं. इसमें क्या होता, थोड़ी लोग जाते रहते नुकसान होके, फिर नया लोग आते रहते. हर एक आदमी अच्छा नहीं है इसमें, थोड़ी लोग अच्छा भी है, सक्सेस स्टोरीज भी है, नुकसान का स्टोरीज भी है. इसीलिए इसको साइंटिफिकली अगर वो हमने जो बताया साहब ने, वो श्रीहरि जी ने, वर्ल्ड में 2nd प्लेस में है, 3rd प्लेस में है, 4th प्लेस में है, मगर आज भी सरकार का सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए. हमारे लिए नहीं, समाज के लिए. जो आपने बता रहे, जो लेस रेट में सस्ता में प्रोटीन कहाँ मिलेगा, हमारा अंडा में मिलेगा, वो चिकन में मिलेगा, वो दही में मिलेगा, दूध में मिलेगा. वो लाइव स्टॉक का बिजनेस करना बोलते उतने इजी नहीं है. वो ये लोग तो फीड वाला है, ये लोग का इतना नुकसान अप एंड डाउन के बारे में नहीं मालूम है, मगर हर एक जो पालन करने वाला है उन लोगों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है. इसलिए श्रीहरि जी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर मी यू. हम ये कमिटी में मैं हर एक मीटिंग में जाता हूँ, मैं मंत्री जी से वही कहते आया हूँ, इसको जरूर सपोर्ट करना बोल के. मैं 38 ईयर से इसमें हूँ साहब, मैं 38 ईयर्स में ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में हूँ. मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ इसके अंदर, मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ. मैं जानता हूँ इसका दुख क्या है, इसका अच्छा दिन क्या होगा हम जानते हैं. इसीलिए आने वाले दिन में ये आंकड़ा जो दिखता है, इतना आया बोल के, ये आंकड़े के पीछे जो समस्या है, वो समस्या हल करने का शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट तेलंगाना थोड़ा करना चाहिए. नहीं तो ये एक बास्केट इन इंडिया इज तेलंगाना, नो, नवेडेस उतना नहीं है. इसीलिए मच फिशरीज के बारे में मैंने मंत्री जी को सूचना देता, सर इनलैंड फिशरी तेलंगाना के अंदर बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स है, वाटर बॉडीज है, पुराना हमारा हिस्टोरिकल टैंक्स है. इसके ऊपर ये तेलंगाना के अंदर मछुआरों का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा गरीब भी हुई है. थोड़ा सरकार ने सीड थोड़ा सप्लाई कर रहा फ्री रेट में, मगर वो बस नहीं होता. ये फिशरीज के जो जितने जो पैसा खर्च कर रहा है, तेलंगाना इनलैंड फिशरी के बारे में भी हम सपोर्ट करना जरूरी है. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना सरकार, श्रीहरि जी, हम NLM स्कीम में 200 स्कीम आया था, पैसा नहीं आया तो मैं मीटिंग लगा के, आप जब मंत्री नहीं था 6 मंथ पहले, मैं खुद इन्वॉल्व होके ये मीटिंग लगा के
पूरा पैसा केंद्र सरकार से लाके ये सभी जो एलएलएम में जो बेनिफिट लेना है वो लोगों को दिला है। आने वाले दिन में जरूर जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में, लाइवस्टॉक के बारे में मैं भी एक हूँ लड़ने के लिए। मैं गवर्नमेंट में हूँ मगर मैं फाइट करता हूँ फार्मर के लिए, मैं फाइट करता हूँ प्रजा के लिए। इसीलिए जरूर मेरा जो कर्तव्य है, इससे पहले जो कर्तव्य है वो ही कर्तव्य आने वाले में दिन में जरूर करेंगे। अगर समस्या है तो हल करने का मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके इन शब्दों के लिए और किस तरह आपने बताया कि किस तरह आप इंडस्ट्री को और सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि आज 66th नेशनल सिंपोजियम पे आप हमारे बीच यहाँ। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। As we move forward, may I now request our guest of honor, Felicitation Srihari, Minister for Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Government of Telangana, to please join us and share a few words of encouragement. He's always been a wonderful visionary and amongst us all. A round of applause as he joins us to share a few words with this august gathering. मंच पे विराजित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अपना चीफ गेस्ट आज के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे बुजुर्ग जहाँ अभी कह रहे थे कि भाई 38 इयर्स में इंडस्ट्री से हूँ और पॉलिटिकल में हुई इंडस्ट्री में, और जहाँ तक मेरी सोच है जो बैठे हुए हैं, ये पहली बार मैं देखा हूँ जो रिलेटेड मिनिस्ट्री कंसर्न्ड कैस्ट को मिला है। 70 इयर्स के बाद पहली बार जब आंध्रा तेलंगाना मिलजुल के था, आज तेलंगाना सेपरेट हो गया, होने के बाद एक फिशरी डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री एक फिशरमैन को मिला है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं भी सोच रहा था, ईटले साहब से कह रहे थे भाई ये बीसीओ का जैसा आप यादव है तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आ गए, तो ईटला जी फिशरी में आ गए, तो वो सोने का अंडा भी देने वाला है, बहुत बड़ा आदमी है वो। इसलिए मेरा बोलने का ये मतलब था कि आज ये मंच पे पहली बार बैठने को मिला है कि ईटला जी से, और हमारे प्रिय सब्यसाच घोषी जी आईएएस स्पेशल चीफ सेक्रेटरी थे, और हमें मुत्तु कुमार स्वामी जी एंड विजय विराजित तरुण श्रीधर जी, दिव्य कुमार गुलाटी जी एंड विजय बी भांद्रे जी एंड निसार एफ मोहम्मद जी एंड हमारे मिट्टू साई कुमार, ये फिशरमैन स्टेट चेयरमैन है, और हमारे ज्ञानेश्वर चेयरमैन मुद्रा संगम के थे। और मुझे ये बात बताना बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार मैं अपना डिपार्टमेंट के बारे में खुद एक रिलेटेड कैस्ट से लगता हूँ तो बोलने में बहुत खुशी होती है। पहले ये मौका मिला है एंड जरा ये लिख के दिया था हमारे सवरसा जी घोष जी, लिख के दिया था, मैं वो पढ़ना जा रहा हूँ, बाद में 2 मिनट बात करूंगा। Honored chairperson, distinguished guests, esteemed members of the CLFMA, ladies and gentlemen. It is both an honor and a privilege to be standing before you today at the 66th National Symposium of the Compound Livestock Feeds Manufacturing Association of India, CLFMA. First, I would like to extend my heartfelt thanks to CLFMA for inviting me to this important symposium. This event offers us a unique opportunity to come together as a community of the stakeholders to discuss the future of animal agriculture and to share ideas and solutions that will shape the way forward for the critical sector. The theme of today's symposium, Animal Agriculture in India, the Way Forward, holds deep relevance, especially for us in Telangana. As we look to the future of animal husbandry, dairy and fisheries, we must focus on sustainability, innovation, collaboration. It is the
It is these principles that will guide our journey towards a more productive, profitable, and sustainable animal agriculture sector. Telangana, a state rich in agriculture and natural resource, has long had a strong connection with the animal husbandry. For generations, farming families in our state have raised cattle, buffaloes, goats, and sheep as part of their livelihoods. Our state has also been a leader in dairy farming, and we are known for the quality of milk production that reaches households not just in Telangana but across India. As the Minister for Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development, I am proud to say that animal agriculture plays a crucial role in Telangana's rural economy. It is the primary source of income for millions of farmers, rural enterprises, and small-scale producers in the state. Dairy farming and poultry farming alone contribute to the livelihood of 7 million people in Telangana. The fisheries sector is also critical, as Telangana is home to many rivers, lakes, and ponds which provide abundant opportunities for aquaculture. We are also blessed with a strong tradition of livestock farming, particularly in the grazing area of fodder production, which have supported the growth of the state and animal agriculture sector. Under the leadership of our Chief Minister, we have been implementing various supportive schemes aimed at improving animal husbandry practices, enhancing the health and livestock, and increasing production efficiently. We recognize that animal health is the first step towards better productivity. And as such, the government is focusing on innovative like we are building more veterinary centers across rural and remote areas, ensuring that our farmers have access to affordable veterinary care, including vaccination, medicines, and expert consultation for animal diseases. Telangana has also focused on improving the genetic potential of livestock through breeding program aimed at producing high-yielding the disease-resistant breeds. We are working with farmers to help them adopt improved breeding practices that ensure healthier and more productive livestock. We have strengthened our disease management programs and improved the access to animal nutrition products that are essential for the maintaining healthy livestock. Our government has launched free vaccination drives, and we are also focused on enhancing diseases surveilling system of the prevent outbreak of harmful diseases. Dairy farming is particularly close to my heart as it plays a central role in strengthening rural economies and providing nutritious food to our growing population. Telangana's dairy sector has witnessed substantial growth in recent years with a marked increase in milk productions. Our state is one of the top producers of milk in southern of India. The support of the dairy farmers, our government has implemented several programs. We provide subsidy for the purchase of milking equipment, cold storage facilities, and fodder development, ensuring that our farmers can produce milk in a more efficient and hygienic manner. We are also focusing on improving the processing infrastructure for dairy products. This helps dairy farmers receive better prices for their milk and enhances the value-added product markets, which can significantly boost their income. The price we offer to our milk farmers is among the highest in the country. Fisheries in Telangana are another area of immense growth and potential. Our government has been promoting
aquaculture and fish farming as key part of the rural economy. Telangana has great potential for fish water, fish farming, and we are helping farmers and entrepreneurs adopt modern fish farming techniques. We allocated 123 crores of distribution of fish seedings to about 27,000 water bodies for an estimated production of 6 lakh tons of fish. This is one of the kind invitation of India. We also support aquaculture training. We provide training programs to teach modern fish farming techniques. Besides, we also provide financial support for fish farmers. Similar dairy farmers, fish farmers in Telangana also receive financial assistance for the purchase of fishing nets, fishing feed, and pond construction. We also provide support for cold storage facilities to reduce post-harvest losses. As we move into the future, innovation and technology will play an increasingly important role in shaping the future of animal agriculture. AI, digital tools, and precision of farming technologies offer us powerful solutions to improve the productivity and sustainability of our agriculture practices. However, technology is not end in itself. Should serve the need of our farmers. For example, AI-driven tools can help us optimize feed formation and ensure better animal health management. Data analytics can guide farmers on the best practice for the managing livestock and fish farmers, helping them reduce waste, increase efficiency, and improve their income. I would like to express my deep appreciation for the work done by CLFMA in advancing the livestock feed industry. The work you are doing to improve animal feed quality, raising awareness, and promote best practice is invaluable. Your efforts in advocating for balanced nutrition and improving the feed formation process are essential for the growth of our sector. The Telangana government is committed to collaborating with CLFMA and other stakeholders to drive innovation and ensure that our farmers and producers are equipped with the tools, resources, and knowledge to succeed. As we move forward, animal agriculture in Telangana and India holds a bright future. With a focus on sustainability, technology, and collaboration, we can ensure that the livestock sector continue to grow, provide employment opportunities, and support to the livelihood of millions of farmers. I thank CLFMA for the opportunity and your ongoing efforts to improve the livestock feed industry. I also encourage all stakeholders here today to continue working together to ensure that the future of animal agriculture in Telangana and India is one of growth, innovation, and sustainability. Let us embrace the challenges ahead with the confidence, knowing that together we can build a stronger, more sustainable future for our farmers and the nation. Thank you. बस अभी तो अंग्रेजी में हो गई, तो अभी थोड़ा तेलुगु या हिंदी में बात करूं, है ना बात? जो मैं आधा समझता था वो तो लिख के दिया था, मैं पढ़ दिया। हमें जैसे मैं पूरा समझता हूं उसके बारे में 2 मिनट बोलना चाहता हूं। जैसा हम जैसे नेता जैसा मौका मिला, एक इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, इससे पहले बहुत कुछ बोल रहे थे, भाई ये इंडस्ट्री में ऐसा हुआ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। अरे हम तो कपड़े सफेद पहन के बैठे खड़े हुए यहाँ पे, सब सूट वूट पहन के बैठे यहाँ पे। आप लोग सोचना चाहिए कि हम क्या करना है। आप ऐसा कुछ सजेशन देंगे गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर
जो आप सजेशन देंगे वो उसके मुताबिक हम कुछ कर पाए। जैसा मैं समझता हूँ, हम जैसे लीडरों को अगर अपना नेशन के लिए, जैसा इसमें बहुत चीज रिलेटेड है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हम डाउनलोड भी करना चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, अगर ऐसा कुछ काम में अगर हमारा कुछ मदद होता है तो हम ये तो बात देते हैं बराबर, किसी हाल में दिन या और रात 24/7 कभी भी अगर हमारी सहायता की जरूरत पड़ी, बिल्कुल, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बराबर आपके पीछे हम रहेंगे। जैसा आप आगे बढ़ेंगे हम आपके पीछे रहकर इंटरनेशनल में इंडिया सब कुछ कर सकता है। ये जो लाइवली जो एनिमल रिलेटेड एंड ये पोल्ट्री एंड डेयरी डेवलपमेंट रिलेटेड, इसका इंडस्ट्री के हमारे तरफ से हम बात देते हैं, बराबर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हम रहेंगे, बिल्कुल अपना देश के लिए हम काम करेंगे। जय हिंद। Thank you so very much, sir, for your kind words. Right here at CLFMA of India, Association of Livestock Sector, we are privileged to have amongst us a visionary who today has been credited with having put together initiatives and created platforms and programs for the upliftment of the livestock sector. We are truly honored to have amongst us our chief guest, Professor S.P. Singh Bhagelji, Minister of State of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Please do put your hands together as we honor him. CLFMA द्वारा आयोजित 66 इस संगोष्ठी के, जिसकी थीम है एनिमल एग्रीकल्चर इन इंडिया द वे फॉरवर्ड, और अपनी 60वीं शायद एनुअल मीटिंग के इस मंच पर विराजमान तेलंगाना राज्य के पशुपालन, मत्स्य पालन, स्पोर्ट्स एंड यूथ मंत्री श्री वकील श्री हरि जी, श्री दिव्या कुमार गुलाटी जी, चेयरमैन क्लेफमा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सब्यसाची घोष, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सरकार, भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एनएलएम देख रहे हैं मुथु कुमार स्वामी जी, मेरे मित्र और तेलंगाना के बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, मेरे ख्याल से 7वां कार्यकाल है, 7 का बड़ा महत्व है भारत में, 7 समुद्र, 7 आसमान, 7 भांवरें, 7 जन्म, उसको इन्होंने छू लिया है। वैसे मैं भी बराबरी पे हूं, मेरा भी 7वां है। अब हम दोनों में कंपटीशन रहेगा कि 8वां, 9वां, 10वां। श्री ठाला राजेंद्र जी, फिशरीज के चेयरमैन द्वय मुत्तु साई ज्ञानेश्वर जी, तरुण श्रीधर जी, एक्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विजय भंडारे जी, कन्वीनर मैनेजिंग कमेटी, श्री निसार एफ मोहम्मद साहब, साई कुमार जी, डॉक्टर ओपी चौधरी, जब मैं आया था विभाग में तो ये जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रिश्ता है हमारा इनका, ये मेरी लोकसभा के रहने वाले हैं जहां से मैंने हैट्रिक मारी थी। सुरेश देवरा जी, एक्स चेयरमैन, क्लेफमा के अन्य अधिकारी, और आपकी अपनी एनडीए या यूपीए 17 एसोसिएशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी साहिबान, राज्य और केंद्र के बाकी अधिकारी, देवियों एवं सज्जनों, मुझे बेहद खुशी है कि बहुत क्लेफमा द्वारा आयोजित बहुत समसामयिक विषय पर यह संगोष्ठी हो रही है। दोनों का बड़ा
आपसी रिश्ता है एनिमल एग्रीकल्चर। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। 2 दिन आप यहां बैठेंगे, आपके विचार मंथन से, खासतौर से टेक्निकल सेशन से कुछ जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो किसानों की भलाई करेगा। मेरी बड़ी इच्छा होती है और एक सुझाव है कि ये लैंप जलाना, स्वागत करना, स्वागत भाषण देना, फिर हम लोगों के भाषण होने, फिर चले जाना, इससे समस्या का हल नहीं होता है। मैं चाहता ये हूं कि बंद कमरे में खुली बातें होनी चाहिए। कमरा बंद, बात खुली। उसमें कहां आपको दिक्कत आ रही है, पहले पटवारी से लेके शुरू करो, लेखपाल से। पहले तो वही आपको काफी परेशान कर देगा जमीन के नापने के मामले में। तो विभिन्न इंस्पेक्टर जो होते हैं, इंस्पेक्टर राज 16-17 और होते हैं, वो वहां की दिक्कतें होते हुए, जिला प्रशासन से होते हुए, स्टेट, सेंट्रल, ये खुल के बातें होनी चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक बार मैं यहां ना बैठता, ये भाषण ना होता एक लाइन का भी, लेकिन मुत्तू स्वामी जी, घोष साहब, हम दोनों मिनिस्टर और एसोसिएशन के लोग, एक मेज पर जरूर बैठना चाहिए था और उसमें बातें होनी चाहिए। कारण, समस्या और समाधान, उससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। चलिए, फिर भी बैठे तो हैं। मैं अपने बारे में कह दूं कि लोकसभा चलते हुए 3 बार मैं मिलता हूं, सुबह पार्लियामेंट से पहले, लंच में, पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद। तो मुझसे समय लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो टाइम आपको सूट करे, 11 से पहले, 1 से 2 और शाम के बाद रात 12 बजे तक। जो विभाग सौंपा गया है उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन जरूर आने चाहिए। मंत्री जी को फिशरी इसलिए मिली है कि ही बिलोंग्स टू ए फिशरमैन कम्युनिटी। तो मछली को कोई तैरना नहीं सिखा सकता और फिशरमैन को कोई समझा नहीं सकता कि मछली पालन कैसे होता है, और मुझे कोई पशुपालन नहीं सिखा सकता। हम ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं कि ये हमारे डीएनए में है। तो आदमी माथे पर जात का ठप्पा लेके पैदा होता है, वो पीछा नहीं छोड़ती है जिंदगी भर। ये अलग बात है कि मेरे यहाँ पशुपालन 3 पीढ़ी से नहीं हो रहा है, लेकिन आई बिलोंग टू द शेपर्ड कम्युनिटी, तो जल्दी समझ लेता हूं चीजों को। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जिसका संबंध इस देश के किसानों से है, कि किसान की आय को दुगना किया जाए, ये शायद 14 या 15 में उन्होंने कहा था। तो मैं हेडलाइन पढ़ते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया और दिन भर सोचता रहा, इनकम दुगनी कैसे हो सकती है। मेरे दिमाग में तब तक 2 बातें थी, या तो प्रोडक्शन डबल हो, जो हो नहीं सकता, हमने जान निकाल ली है खेत की फर्टिलाइजर डाल डाल के, या रेट डबल हो, जो हो नहीं सकता, साल में 1 आध बार एमएसपी बढ़ती है। रात को लौट के डिटेल में अखबार पढ़ता हूं, तब प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि डबल इनकम होगी उन्नत किस्म के, नॉट ओनली पशुपालन। पशुपालन तो कोई चीज ही नहीं है जब तक उसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं होगा। उन्नत किस्म के पशुपालन, वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन, विश्व स्तर का मुर्गी पालन,
बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, लागत कम हो तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और लागत कम करनी है तो नैनो यूरिया और डीएपी, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके हम इनकम को दुगना कर सकते हैं, जिसमें हमारे विभाग की बड़ी भूमिका। अब इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। प्रधानमंत्री ने अगर कहा है तो फिर कुछ किया भी है। किया ये है कि जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट कृषि विभाग के वट वृक्ष के नीचे पिछले 70 साल में पनप नहीं पाया, उसको एग्रीकल्चर से अलग किया। मुझे लगता है कृषि मंत्री की आखिरी लास्ट प्रायोरिटी रहती होगी जब मछली वाली फाइल आती होगी या कुछ पशुपालन की आती होगी, डेयरी की। उनकी आईसीएआर में अगर 150 संस्थाएं हैं तो 10-12 ही तो हमारी हैं, बाकी तो सब एग्रीकल्चर की है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आईसीएआर जैसे है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी जगह फिशरी की अलग आईसीएआर होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री की अलग होनी चाहिए, उसका ए हटा देना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च, तब जाकर के लैंड टू लैब असली बात पहुंचेगी। तो अलग बनाया है तो अब अलग सेक्रेटरी है, अलग मिनिस्टर है। अब सपोज ये एग्रीकल्चर में होता तो क्या आना संभव था? बड़ा विभाग है बहुत। हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमारा ही विभाग है, यही वाली ब्रांच। हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमें यही करना है। तो उसका अंतर भी 14 साल में उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ या उसकी जोत कम हो रही है और हमारी पशुपालन की 30% योगदान हमारा बढ़ गया है। एक दूसरी बात भी कहूंगा कि 2047 का जब सपना दिखा ही दिया है और संकल्प ले ही लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, तो कल से नहीं, कल तो कभी आई नहीं जिंदगी में, आज से ही रोड मैप बन जाना चाहिए। और आज से ही शुरू काम होगा। और 15 अगस्त 47 कोई ऐसा थोड़े ना कि उसी दिन जाकर के टच करेंगे। 40 तक आते आते विश्व को महसूस हो जाना चाहिए कि अब ये 47 तक तो पक्का डेवलप कंट्री हो जाएंगे, नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी, सुपर पावर हो जाएंगे, विश्व गुरु हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र हो जाएंगे और मेरी भाषा में दुनिया की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारा दबदबा होगा। इसके लिए हर विभाग का रोड मैप एकदम आज ही बन जाना चाहिए और कल से उस पर काम शुरू होना चाहिए। अब बच्चों ने भी तय कर लिया है कि नहीं, हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। दूसरा, जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हुआ है, तब से हर चीज ग्लोबल हो गई है। जो डार्विन का सिद्धांत हमने बायो में पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपकी पोल्ट्री पर भी लागू होगा। आपके अंडे में की एमएम कितनी है, कोई मुझे आप ही बता रहे थे कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो इतने एमएम का है, ये इतने एमएम का है। तो विश्व स्तरीय प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। दूसरा, वैकल्पिक मार्केट पर हमेशा ध्यान देना। किसी एक आतंकवादी संगठन के द्वारा एक किए गए काम से दो देशों के रिश्ते कई वर्षों के लिए खराब हो जाते हैं और पता नहीं कौन, किस देश का कौन सा मुखिया
कब क्या निर्णय ले ले। हमारा 60,000 करोड़ का फिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, जिसमें 20,000 करोड़ केवल यूएस के लिए है। अब पता नहीं टैरिफ, तो हमेशा एक पैरेलल भी हमें मार्केट हमेशा देख के चलना पड़ेगा। मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी अपने अवार्डीज को बधाई देने पर। जैसा घोष साहब कह रहे थे कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा हमने रोना बहुत रोया। रोना भी रोना चाहिए, उसके बाद समाधान भी होना चाहिए। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। तो जब भी आंख खुले तभी सवेरा समझो। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बैठा करें, और जेंटलमैन टॉक 15-20 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है, जल्दी समझ में आ जाती है। ये तो बड़ा औपचारिक होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो हमारे ऑफिस के दरवाजे और घर के आपके लिए खुले हुए हैं। बात बात पे हम चाइना वाइना का उदाहरण देते हैं, तो जब वहां जाते हैं तो वहां का उसको सीख साख के अपने अप्लाई करना चाहिए, ना कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सब आके भूल जाना चाहिए। आपको बधाई, बहुत सीनियर वेटरनियंस को, इस फील्ड के विभिन्न क्षेत्रों के महारथियों का। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की एग्जाम हुई है, उनको अवार्ड मिला है। अवार्ड का बड़ा महत्व है। एक मेरा अपने जीवन का अनुभव है, तो मैं जिंदगी भर सुनाऊंगा हर अवार्ड शो में। कक्षा 5 में जब हमारी उम्र 9 या 10 साल की थी, नहीं क्लास 4 में 9 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई, तो मेरे टीचर ने मेरा नाम लिखवा दिया और रामचरितमानस की बहुत सी चौपाई रटाई। तो मैं अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया, फिर तहसील में, फिर जिले में। तो फर्स्ट आने पर उस समय तब विकासशील भी नहीं थे हम, शायद अविकसित थे। तो फर्स्ट आने पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं, क्योंकि उसने मेरी स्व अर्जित थी वो। उस इनाम ने 9 साल की उम्र में ये माइक का फोबिया दूर कर दिया, मंच का भी बड़ा डर होता है, मंच का, स्टेज का फोबिया दूर कर दिया, और असली बात है पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया। बाद में मैं स्टेट में मिनिस्टर बना, दिल्ली में एमओएस लॉ रहा, एमओएस हेल्थ रहा, सामने हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के, मैटर तो खराब हो सकता है, आज भी खराब है, लेकिन पैर नहीं कपकपाते, चाहे सामने 1,000 करोड़ वाले पोल्ट्री वाले बैठे हों। ये उस इनाम का कमाल है। तो आज जिनको अवार्ड मिला है, ये हमारे क्लेफ्मा का पद्म श्री पुरस्कार है। इस देश में आबादी बहुत है, अवार्ड बहुत कम है। अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड नहीं करेंगे तो बहुत लोगों का जिंदगी में किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से काम नहीं चल पाता है। अच्छा लगा होगा आपको, आपके किए गए, आपने जवानी के बेहतरीन साल इस विषय पर गुजारे हैं। आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपको। हर क्षेत्र में मिलता है, पॉलिटिक्स को छोड़ के हर फील्ड में मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। यहां शायद शुरू हुआ नहीं अभी, ना पार्लियामेंट ने शुरू किया है, ना किसी पार्टी ने शुरू किया है। बेस्ट एमपी का तो मिल जाता है। तो आपको मुबारक हो, और बाकी लोग को प्रेरणा मिलेगी। जब आप उठ के स्टेज पर आए थे, या हमारे कई वेटनेरियन आए थे,
उस समय इसी सभागार में बैठे हुए आपके फील्ड के लोगों के जेहन में एक सेकंड के लिए एक विचार आया होगा, काश हमने भी कुछ और मेहनत की होती। कर तो रही है, इस हॉल में आने वाले सब मेहनती लोग हैं, थोड़ा और किया होता तो आज हमको भी अवार्ड मिलता। ये काश उनको अगले साल वाले अवार्ड में लेके आ जाएगा। दूसरा, जब आप फेसबुक पे डालेंगे तो जरूर एक आध कमेंट करेगा, ये मैनेज हो गया होगा अवार्ड। तो 2-3 शेर सुनाने का मन है कि अवार्डीज के लिए, ये आम लोग नहीं होते हैं, किसी भी फील्ड में कोई अवार्ड पाए या आपकी तरह 7 बार जीते, ये थोड़े जुनूनी लोग होते हैं। साइको भी कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, कुछ ज्यादा घंटे काम करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क इनका दूसरों से थोड़ा अलग होता है। एक तो वो है कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन बीच बीच में देख लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, 8वीं बार के लिए तैयारी। तो जो एक आध कहेंगे मैनेज हो गया होगा, उनको कह देना कि ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं राव साहब, वो जो अपने फादर ऑफ पोल्ट्री हैं, वो किसी कॉलेज में बहुत छोटे से पद पे थे। सबकी कहानी यही है, शुरुआत सबकी छोटी होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखें कहां से शुरुआत की। लेकिन नेक नीति हो, क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देना। दिल्ली के लोग कहते हैं बघेल साहब आगरा से पेठा ले आना, तुरंत कहते हैं पंछी का लेके आना। तो पंछी ने ये इज्जत पाई है। राजनीति भी अब साख की रह गई है, बड़े बड़े लोग हारने लगे, बड़े साधारण घरों के लोग जीतने लगे हैं और फर्श से लेके अर्श तक पहुंचने लगे। अब एक्चुअली क्या, जब से गूगल बाबा पैदा हुए हैं, विषय एक ही है, सबको एक सा मैटर मिलता है। हम सबको एक सा मैटर मिला है, आंकड़ेबाजी का। मैं कुछ चैलेंजेस रहते हैं, बीच में तैयार रहना चाहिए। पोल्ट्री के लिए एथेनॉल ने नुकसान कर दिया जब से मक्का वहां जाने लगी। तो हमेशा वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर रिसर्च हमेशा होनी चाहिए। हमने उपलब्धि तो की है। अब मैं कहूंगा 14 से पहले क्या था, अब मैं तो 14 के बाद ही के उदाहरण दूंगा। फिर मंत्री जी कहेंगे जब मैं कहूंगा पहली बार। तो आंकड़े हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सच होते हैं। तो 2014 से पहले बोवाइन का 1640 किलोग्राम दूध था, जो अब 2072 किलोग्राम हो गया है। अब भाई ये तो हो गया है, 26.34% वृद्धि हुई है दूध में। कहते हैं भारत में दूध की नदियां बहती थी, कब बहती थी? द्रोणाचार्य के पास अश्वत्थामा के लिए गाय नहीं थी और दूध की नदियां बहती थी। वो एक गरीब ब्राह्मण था, वो ऐसे भिक्षा, ये दूध की नदियां बहती कब थी मैं समझ नहीं पाया। हम 6 भाई थे तो सोमवार को एक भाई को दूध मिलता था, मंगल को दूसरे को, बुधवार को तीसरे को, शुक्रवार को चौथे को, और दूध की नदियां बहती थी। लेकिन 14 तक 307 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो अब बढ़कर 417 ग्राम हो गया है, 471 ग्राम।
दूध का एक नापने का, जो हम मेरी तरह गांव में पैदा हुए होंगे वही समझ पाएंगे, एक छोटा सा नपना होता था 100 ml वाला। भाई तेल तो समझ में आया है कि तेल 100 ml 2-3 दिन चल जाएगा, इतने ही पैसे हैं, लेकिन दूध भी उससे नापा जाता था 100 ml। 100 का भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, उससे भी छोटा एक होता था। कुछ गरीब लोग उतना ही दूध लेके जाते थे चाय के लिए। तो 80 मिलियन किसान पशुपालन से जुड़े हैं। सब मिला के लाइव स्टॉक 3 करोड़ लोगों के छिलकों को भी बहुत दूर फेंक के आते थे। अब हर चीज में ओपन हो रहा है मामला, तो इसका भी हो रहा होगा। अब 80-85 तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि इस विज्ञापन का भी फर्क पड़ा है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मैं घर में किसी के गए, वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन परिवार था। एक महिला को वॉश बेसिन पे मैंने 6-7 बार साबुन लगा के हाथ धोते हुए देखा। तो मैंने पूछा, भाई 1-2 बार तो धोया जाता है, आपने 6 बार साबुन लगाया है? कह रहे नहीं ऐसे ही। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, और मैं आपके घर ब्रेकफास्ट कर रहा हूं और आप 6 बार हाथ धो रही हैं, तो फिर मैं खाऊं या ना खाऊं? तो कहा नहीं, आपका खाना अलग है। मैंने अपने बच्चे को अंडे को मैश करके दिया है। मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन अपने बच्चे की हेल्थ के साथ समझौता नहीं करूंगी। तो एक ऐसा जैन परिवार जिसमें सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता है, अंडे वंडे तो छोड़ दो, जमीन के अंदर की चीजें जो अखाद्य हैं, जिसमें आलू भी है, जो ना खाते हैं, उस परिवार ने संशोधन किया है कि एग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बच्चों की हेल्थ। मुझे किसी ने समझाया नहीं बचपन में कि ये वाला अंडा वेजिटेरियन है। मैं ये सोचता रहा, जब लोग कहते थे ये वेजिटेरियन, में कहता था कहां से होगा, इसमें माइक्रो लेवल पे पंख भी है, चोंच भी है, आंख भी है। तो मुझे बताया गया कि नहीं, इसमें तो बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। मुर्गी 30 दिन की जगह चाहे 30 साल बैठी रहे इस अंडे पर। तो ये बहुत जाके बाद में आपने समझाया, और मैं वेजिटेरियन बना रहा। लेकिन अब नहीं, अब समझ में आ गया। लेकिन जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे। तो लेकिन इसका प्रचार होना चाहिए। जब मुझे इतने बाद में पता चला कि मुर्गे के बिना संपर्क में आए मुर्गी अंडा देती है, इतने महीने की होने के बाद, ये बहुत बाद में पता चला। मुर्गे से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। वो दूसरे अंडे हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें तो मैं अपनी जगह सही हूं कि उसमें माइक्रो लेवल पे चोंच है, पंख है, पंजे हैं। मुर्गी में, उस चूजे में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये वेजिटेरियन है? जैसे मछली के मामले में अपने हिसाब से परिभाषा बना ली उन लोगों ने जिनकी जात मछली खाने के लिए वर्जित थी, तो उन्होंने कह लिया ये जल तरोई है। अरे भैया, हम लंग्स से सांस लेते हैं, वो गिल्स से लेती है, अंडे देती है, तैरती है, आंख है, छूने पर डरती है, तो वेजिटेरियन कहां से? लेकिन फिश इज गुड फॉर हेल्थ। अब हमने तो बचपन में ओमेगा ओमेगा शब्द ही नहीं हम लोग जानते थे। तो आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक हैं, इसलिए हमारी इस इंडस्ट्रीज का भविष्य अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी एक वर्चुअल हमारी मीटिंग लेने जा रहे हैं, इसलिए मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अब वो आंकड़े पढ़ूं कि 880 मिलियन टन चारे की जरूरत है, 596 मिलियन टन है, 40% की कमी है। 530 मिलियन टन सूखे चारे की जरूरत है, 408 मिलियन टन है, 30% कमी है। अब ये सब कमी है तो रोड मैप बनाओ ना, फिर तो बनना चाहिए। लेकिन दूध का उत्पादन बढ़ रहा है,
मैं जब गांव में रहता था तो जो भूसा होता था और बरसीन मिला के केवल भैंस को खिलाई जाती थी और 2 बार सानी की जाती थी जिसमें खल पड़ी होती थी। ये शब्द तो किसान ने सुने नहीं थे कि मिनरल वाटर और उसमें क्या क्या कैल्शियम होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए अब दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ा है क्योंकि अब थोड़ा वैज्ञानिक आधार पर पशुपालन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक वर्चुअल मीटिंग में थोड़ा जुड़ना था 5-7 मिनट के अंदर ही, तो मैं दोनों सरकार के अधिकारियों से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि जो जो दुश्वारियां हों पोल्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, थोड़ा एक पर्चे करा दूंगा आपसे कि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ साहब मिस्टर बेहरा खड़े हो जाइएगा। ये यहाँ हैं और इनकी पहचान ये है कि हैदराबाद में जो मछली जैसा मकान दिखे वो हमारा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसका मकान नंबर क्या है, रोड कौन सा है। जहां आपको फिश दिखाई पड़ जाए, अजीवित फिश, वो हमारा बोर्ड का ऑफिस है। तो उसकी बड़ी भूमिका आपके साथ हो सकती है। तो ये भी चाहूंगा कि आप लोग अगर पोल्ट्री से जुड़े हैं तो भी एनिमल हस्बेंड्री से जुड़िए, गोट्री से जुड़िए, फिशरी से जुड़िएगा। ये सबसे बड़ी संस्था है और सुना है इन पे अरबों रुपए भी हैं। तो आप कुछ करना चाहेंगे री एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम, बायोफ्लॉक में, कच्चा आरएस में। अभी मैं रास्ते में एक देखते हुए आया हूं कि जो प्रॉट्स कहते हैं ना, ट्रॉट्स, जो शिमला, हिमाचल, ठंडे पानी, कश्मीर में होती है, वो हैदराबाद जैसी गर्मी में हो रही है। तो उसकी विशेषता है कि उसको 13 डिग्री टेम्परेचर, 23 13 डिग्री ठंडा पानी चाहिए, तो वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। 40 टैंकों में ट्रॉट्स को मैं एयरपोर्ट वाले रास्ते पर देख के आया हूं और 4.5 किलो तक की हो गई है। तो वो कश्मीर में 500 रुपए किलो है, दिल्ली आते आते 2000 हो जाती है। कुछ ऐसा भी जुगाड़ करो कि हिल्सा भी होने लगे, उसके लिए बांग्लादेश ना जाना पड़े ना। तो ट्रॉट्स जब हो सकती है, ये देखो नया प्रयोग है। उसकी विशेषता है केवल पानी का ठंडा पानी होना चाहिए। तो इन्होंने अपना चिलिंग प्लांट से ठंडा कर लिया। क्या नाम है उनका, नासिर साहब? आदित्य। तो उससे भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद आपकी एसोसिएशन को कि उन्होंने बुलाया और इस बहुत समसामयिक विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है। कुछ समाधान जरूर निकलेगा। बैठते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलना चाहिए। और जो मैंने पहले बताया था कि बंद कमरा खुली बातें साल में 2-3 बार हो जानी चाहिए और किसी को पर्सनल नहीं लेना चाहिए कभी। जो बताया जा रहा है वो राजहित में बताया जा रहा है, राष्ट्र हित में बताया जा रहा है, किसानों के हित में बताया जा रहा है, देश के हित में बताया जा रहा है, उसको कंप्लायंस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं हम कि आज वो हमारे बीच यहाँ आ भी सके, अपनी बातों से हमें प्रेरित भी किया और अपनी बातों से हमें साथ भी दिया और सचमुच कहें तो दिल से बोले। आज मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं जानती हूं कि उनके शेड्यूल अभी बहुत बिजी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे बीच यहाँ निसार मोहम्मद जी, हमारे ऑनरी ट्रेजरी जो है, वो एक वोट ऑफ थैंक्स के रूप में आपका तहे दिल से धन्यवाद करें। जोरदार तालियां हो जाएं निसार जी के लिए। I am indeed privileged to perform the pleasant task of proposing the vote of thanks at the 66th National Symposium 2025. On behalf of CLFMA of India, I extend my sincere thanks to our chief guest, Professor S.P. Singh Baghel, Minister of State in Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, for his valuable insights about the livestock industry. I would like to thank Mr. Itele Rajendran, the MP of Midchil, Telangana. I would also like to thank our guest of honor, Sri Vakiti Srihari, Minister of Animal Husbandry, DD and Fisheries, Government of Telangana, for speaking about the fisheries industry. Our special guest, Sri Sabyasachi Ghosh,
IAS Chief Secretary, Government of Telangana. Special guest, Dr. Muthu Kumaraswamy, B, Joint Secretary, NLM, that's National Livestock Mission, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Thank you, sir. I'm thankful to the thematic address by Sri Tarun Sridhar, IAS retired, for setting the theme right in relation to the government perspective. Thank you, sir. I'd like to thank Murli in coordinating with Mr. Vakiti Srinivas and Sabyasachi Ghosh. I would like to thank the CLFMA Awards, CLFMA Awards awardees, and thank the CLFMA Award winners. I would like to thank the CLFMA Lifetime Achievement Award winner as well. This time, we have introduced Students Award Program and acknowledged the efforts of the brilliant students for the betterment. We thank Dr. A.S. Ranade and his team for the efforts to make this successful. Mr. Praveen Lunkad for his exemplary services and contribution to the animal feed sector. And while we are having the wonderful vote of thanks by Nisarji, I would like to request Nisarji to be a part of this group photograph as we unveil the souvenirs, and also welcome Mr. Sumit Surekha, Mr. Naveen Pasuparthi, Mr. Abhay Parnekar, Mr. Abhay Shah, Mr. Suresh Deora to be a part of this esteemed dais as they join us for the souvenir opening, which is really the gist of what the CLFMA's contributions are towards the sector and the industry. May I request our wonderful leaders to join us, and I have a souvenir copy for each of them here as our dignitaries on the dais unveil the same. May I request all of you to please be a part. To shorten those kind words of acknowledgement. Once again, a round of applause for our chief guest, Shri Bhagelji, our wonderful guest of honor. Isha, can I continue? Yes. Well, I would like to thank Dr. Karthikeyan and Professor Jyoti Pallad. I would like to thank all the sponsors, speakers, all the delegates, government authorities, consulates, and other renowned dignitaries for gracing the inaugural session. I would like to extend my thanks for the exemplary support given by Government of India. I thank all the past chairmen, office bearers, members of management committee for their continuous active support to CLFMA from time to time. Today, we had an opportunity to hear all your thoughts, which will encourage us for the betterment of our livestock industry. Lastly, I would like to thank Chairman, Convener, and the CLFMA Secretariat for supporting us in organizing this symposium.